Unacademy. Let's try. Hello everyone. Good morning. Am I audible? Please confirm whether I am audible. Okay. So today's class we are going to discuss about the weekly current affairs starting from September 22 to 28 ର ଯାହା ବି important ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ discussion କରିବା. Okay. So these are the topics that we are going to cover today. बहुत किसी टॉपिक्स आज नहीं because I know हमारा prelims exam अच्छी. You have other things to do. But still ଆମେ current affairs तो ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବେଶୀ important things ଗୁଡାକ ଥିଲା I think ଆମେ ସେଟା briefly କିଛିଟା ଜିନିଷ discussion କରିପାରିବା. ଯେମିତି କି GS paper 1 related ଆମର 71st National Filmfare Awards recently declare ହେଇଛି. World Para Athletics ତମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ start ହେଇଛି. GS paper 2 regarding जो बहुत important topic that we need to discuss is Ladakh protest. कौन ପାଇଁ ए Ladakh protest ଟା होଉଛି? What is the reason behind it? What is the solution? केमिति हमें provide करिପାରିबा? Then we have the Deen Dayal Lado Lakshmi योजना. तो को state government एटा वर्तमान announce करछि सेटा टिके हमें देखिदाबा because एटा question पचारे कि ए योजना टा को state announce करिछि. Then India's first railway link to Bhutan. So we are constructing India's first railway link to Bhutan, जोटा कि Bhutan रो भी प्रथम railway link. Bhutan रे आगुरु केबे railway link नथिला. So this is going to the first ever railway link to Bhutan. Then we have GS paper 3 रे आमे गोटे बहुत बढ़िया editorial टा पढिबा which is related to healthcare and healthcare को केमते हमें economic growth सहित relate करि परिबा. So this topic will be beneficial for essay. जदि आमे GS paper रो भी 1 2 3 4 रे को भी टॉपिक रे गोटे related पढिला related to healthcare or economic growth or healthcare को हमें गोटे productivity हिसाब रे केमिति यूज करि परिबा कोन कोन schemes अछि related to healthcare and how we can relate it to economic growth से जिंसटा हमें देखिबा. And also Mahendragiri Hills ओडिसा पे हम ପାଇଁ एटा important हे जाइछि टॉपिक. Mahendragiri Hills biodiversity threatened by construction. कौन असुविधा होछि सेठी सेटा टिके देखिबा. COP30 जोटा कि हबार अछि नवंबर रे तार पूर्वरु इंडिया हैज टू माने प्रति 5 वर्ष रे से तार क्लाइमेट एक्शन प्लान टाको रिलीज करे. तो ता विषय टिके पढिबा. MIG-21 रो लास्ट फ्लाइट ताको रिटायर करा गला तो ता विषय टिके हमें देखिबा because these two are important from the defense perspective. India Agni Prime रो टेस्ट फायरिंग सक्सेसफुल करिछि. बहुत लिमिटेड टॉपिक्स अछि आज बहुत टॉपिक्स नहीं जल्दी सरी जेबो क्लास. बट यस हमर जो कंटिन्यूटी टा रहउछि कि हमें किछि ना किछि जिंस सिखिबा प्रति वीक रे करंट अफेयर्स को हमें केबे पछरे छाडी जेबानी व्हाटएवर एग्जाम इट मे बी अहेड. OPSC अछि बट स्टिल हमको करंट अफेयर्स हम पढ़िया को पड़िबो. गुड मॉर्निंग जगन्नाथ. ओके सो लेट अस स्टार्ट. ता पूर्वरु लास्ट क्लास रे मु तुमको गोटे क्वेश्चन देथिली
Consider the following properties which is included in the World Heritage List released by UNESCO, and how many of these above properties were included in 2023. 2023 ରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କଣ କଣ properties include କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ତାର ଆନ୍ସର ମତେ ଦବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବି ପଚାରିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟରେ କୋଉଟା 2023 ରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି? So and try to answer. Chat ରେ answer କର। କାହିଁ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଖାଯାଉନି ମତେ? Santiniketan, Rani Ka Vav, Sacred Assemblies of the Hoysalas, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. କୋଉ ଚାରିଟା 2023 ରେ include କରାହେଇଛି World Heritage List ରେ? Only two. Yes, Vijay, it's correct. Only two. କୋଉ ଦିଟା? Can you tell me କୋଉ ଦିଟା? Which two are added in 2023 in the World Heritage List? If you see Santiniketan ଆମର 2023 ରେ add ହେଇଥିଲା ହେଲା। ରାଣୀ କା ବାव 2014 ରେ add ହେଇଥିଲା World Heritage List ରେ। ଚାରିଟା ଯାକ ଆମର World Heritage List ରେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ କୋଉଟା କୋଉ ଇୟର ରେ add ହେଇଥିଲା? ଓକେ, Sacred Assemblies of the Hoysalas ଏଇଟା କେବେ add ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ବି ଆମର 2023 ରେ add ହେଇଥିଲା। Mahabodhi Temple Complex 2002 ରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା, 2002 ରେ ଏଇଟା add ହେଇଥିଲା। So question ପଚାରିଥିଲା 2023 ରେ କୋଉ ଗୁଡାକ add ହେଇଥିଲା? So it is only two, Santiniketan and the Sacred Assemblies of the Hoysalas. So this was asked in UPSC 2024. So that is why it is very important कि हमें पूरा list मन रखिबा World Heritage List रे recently को गुडा add ହେଇची ହେଲା, କୋଉ year ରେ କୋଉଟା add ହେଇଛି ତାଙ୍କର sequence ଟା ବି ମନେ ରଖିବାଟା ଏଠି important ହେଇଯାଉଛି, otherwise we could not answer this. Okay, चलो। So World Para Athletics kicks off in New Delhi. तो ଗୋଟେ ଥାଏ ତମର Paralympics ହେଲା, Paralympics ତ ଥାଏ, Olympics ଯୋଉଥିରେ ଆମର Paralympic ମାନେ ସେମାନେ participate କରନ୍ତି, but this is your World Para Athletics. Okay, so World Para Athletics ବର୍ତ୍ତମାନ commence ହେଇଛି New Delhi ରେ. So India is hosting it for the first time. Okay, and ଆମର sports minister ki I hope ତମେ ଜାଣିଥିବ, Mansukh Mandavia ji. So he is the Union sports minister, ସେ ତାଙ୍କୁ attend କରିଥିଲେ। So କଣ ଏଟା? It is basically a flagship global competition for para athletes organized biennially by World Para Athletics, and it serves as the highest platform after Paralympics. It is second highest platform ଆମେ କହିପାରିବା for track and field events, basically for the differently abled athletes. ओके, सो वर्तमान एटा 2025 रो होस्ट होची इंडिया, न्यू दिल्ली रे एटा होस्ट होची, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इज इंडिया इज होस्टिंग द चैंपियनशिप। कोटी होस्ट होची जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे with the newly built world class mondo track. ओके, मैस्कॉट किए? वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स रो मैस्कॉट होची ये विराज। प्लीज रिमेंबर दिस नेम। को भी स्पोर्ट्स इवेंट हो सेतिरे किछि ना किछि हमें मैस्कॉट गोटे रखू। सो ये पैरालंपिक्स तो कहि परबेनी, वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स रो ये होची मैस्कॉट विराज। सो यू कैन सी कि एठी गोटे प्रोस्थेसिस तार भी लागि छि। ओके, सो द नेम इज विराज व्हिच इज अ यंग एलिफेंट विथ अ ब्लेड prosthesis. It symbolizes the strength, optimism, inclusivity, courage, and resilience of the para athletes. Okay, so this is the official mascot of the World Para Athletics.
So आरो जदि हिस्ट्री आमे देखिबा इट एक्चुअली बिगन इन 1994 बर्लिन जर्मनी रे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियंस बिगिन हेतिला बट पारा एथलेटिक्स फर्स्ट टाइम तमरो मेंडेविल गेम्स 1952 रे आमे देखिया को पाइथिलु जोटा कि लेटर रोम पैरालंपिक्स रे भी ताको इंक्लूड करा जायतिला बट वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम 1994 जर्मनी रे हेतिला ओके एंड 2025 रे इंडिया इज होस्टिंग इट इनक्लूसिविटी कथा जदि कहबा निहाती एथिरे आमे देखिबा कि सेमति किछि जेंडर बाइसनेस नाही एंड आमे इनक्लूसिविटी कथा जेबले कहूछु कि नॉर्मल लोक गोटे पार्टिसिपेट करि पाउछि स्पोर्ट्स इवेंट रे एंड गोटे पारा एथलेटिक भी पार्टिसिपेट करि पाउछि अलगा अलगा जेंडर रो भी लोक एथिरे पार्टिसिपेट करूछन्ति okay logo and symbol which represent India's heritage inclusivity courage and sporting excellence so এটা কোন মেসেজ দউছি कि it highlights India's rising global sporting ambitions তো हमरो ଗୋଟେ ଏବେ recently bill introduce ହେଇଛି which is the sports bill right तो ଆମେ sports କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମକୁ ଆଗୁଆ ହବାର ଅଛି that is our motto रिसेंटली हमरो एटा भी गोटे मोटो कि जदि हमको सब क्षेत्र रे आगेबार अछि त हमको स्पोर्ट्स ताको भी पछले छाडीबार नै स्पोर्ट्स एंड नॉट ओनली क्रिकेट हमको बाकी सब स्पोर्ट्स रे फोकस करिया पर अछि सेत पे गोटे स्पोर्ट्स बिल भी आछि जोथरे कि बीसीसीआई सब रो रेगुलेशन जणको पावर रे रहइबो गोटे स्पोर्ट्स अथॉरिटी रहइबो तांको पावर रे ए सब जिंस रहइबो राइट सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज एम्बिशंस जोटा कि हम स्पोर्ट्स क्षेत्र रे देखुछु तो ताको भी हाईलाइट करिबो एंड shows the commitment to diversity, equality, and accessibility. Okay, okay so finally, Shah Rukh Khan ko National Film Awards मिलगला. Okay, so it's a very great moment of joy for all of us, for all the Shah Rukh fans. शाहरुख खान सहित काहाको मिलेला सेटा भी हमको जाने को पड़िबो को मूवी को क्षेत्र रे मिलेला हला से सब जिंस टिके एज अ पॉइंट ऑफ करंट अफेयर जनरल नॉलेज ए सब आइडिया भी हमको टिके रहिबा दरकार ओके सो एठु जदि तमे देखि पारथु मोहनलाल आंको मिलेला दादा साहेब फाल्के अवार्ड एटा तो आसे माने जनरल क्वेश्चंस रे आसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रे भी केते टाइम रे आसे पारे काहाको को फिल्म मिलेला आउ थोड़े भी एटा इंपोर्टेंट हो जाउची बिकॉज़ पुष्कर व्हिच इज द ओडिया मूवी ताको भी बेस्ट मूवी रो माने बेस्ट ओडिया मूवी रो ताको प्राइज मिले छी नेशनल फिल्म अवार्ड व्हिच इज नॉट ए स्मॉल थिंग ओके सो इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एंड वी हैव टू नो कि को मूवी को क्षेत्र रे मिलेला So best feature film मिली 12th fail है ना we know this 12th fail रो जे actor अछंती विक्रांत मैसी तांको भी best actor मिलेला शाहरुख खान को भी best actor मिलेला को मूवी पे for movie जवान best direction मिलेला सुदीप्त सेन को for केरला story best actress रानी मुखर्जी for Mrs. Chatterjee versus Norway best supporting actor विजय राघवन मलयालम एक्टर से जने एंड एम सोमू भास्कर तमिल एक्टर तांको मिलेला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी एंड जानकी बोदीवाला बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट सेटा मिलछि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखिथिबो तमे एंड बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन साम बहादुर को भी मिली नेशनल बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन तो नेशनल इंटीग्रेशन पे बेस्ट फिल्म मिली साम बहादुर को एंड एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स पे बेस्ट मूवी मिली हनुमान को एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म अप टू 30 मिनट शॉर्ट फिल्म में काको कहबा 30 मिनट्स तार ड्यूरेशन थिबो सो बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिली गिद्ध द स्कैवेंजर हिंदी रेट आज हला तो ईमान को फीचर फिल्म कैटेगरी रे ए सब फिल्म आ एक्टर्स मानु को अवार्ड मिले छी जदि हमें कहबा नॉन फीचर फिल्म रे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिले छी फ्लावरिंग मैन बेस्ट डिबेट फिल्म मिले छी माउ द स्पिरिट ऑफ चराओ एंड द बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल मूवी हिसाब रे ओडिया रे गोटे मूवी मो बो मो गां ताकू भी मिले छी सो ओनली पुष्कर को मिले छी एटा हमें मन रखियानी बट मो बो मो गां ओडिया मूवी को भी मिली छी गोटे है ना एंड लेंटिना इज आल्सो शेयरिंग द सेम अवार्ड बेस्ट आर्ट्स और कल्चर फिल्म रे टाइमलेस तमिलनाडु इंग्लिश मूवी ताको मिली छी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज सेटा मिली छी साइलेंट एपिडेमिक बेस्ट डायरेक्शन मिली छी द फर्स्ट फिल्म हिंदी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी लिटिल विंग्स बेस्ट साउंड डिजाइन्स दूधगिरी के फूल
ओके, तो एते सारा जिनस तो मन रखा दरकार नहीं, बट जो बेसिक जिनस तमें जानिथिबो कोटा कोटा इंपोर्टेंट, डायरेक्टर, एक्टर, बेस्ट मूवी, फीचर रे, नॉन फीचर रे, ये सब टिके हमको मन रखा पड़िबो। एंड बहुत इंपोर्टेंट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड लास्ट ईयर मिली आई गेस मिथुन चक्रवर्ती को, एंड दिस ईयर 2025 रे मिली मोहन लाल को। सो ही इज मोहन लाल। तमे हमको देखिथिबो दृश्यम रे देखिथिबो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इट वाज फेमस। So he is often called the complete actor for his immense contribution to the Malayalam cinema and the Indian cinema रे भी काम करिसेंती। So he has over 360 films and a career spanning over 4 decades. So from Kiridam, Bharatam, Vanaprastham and Drishyam ए सबु movies रे से किछि ना किछि रोल पोर्ट्रेट करिथिले। And he has previously received the Padma Shri 2001 रे तंको पद्म श्री भी मिली, पद्म भूषण भी मिली 2019 रे, एंड मल्टीपल फिल्म अवार्ड्स भी मिली। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड ऑल्सो एज आई सेड पुष्कर को आमर बेस्ट ओडिया मूवी हिसाब रे मिली। सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ओडियास, राइट? सो हु इज द डायरेक्टर ऑफ पुष्कर? शुभ्रांशु दास इज द डायरेक्टर ऑफ पुष्कर। Okay, so please remember this. Okay, next बहुत important topic is the Ladakh protest. Why is this protest going on? कौन demands रही Ladakh's लोक मानकर, and why is government not taking any action? Because I mean recently देखुछु कि नेपाल रो कौन अवस्था हेची because of this Genji revolution and ए सब जिंस। तो एथिरे हम बीजेपी रो जो ऑफिस टाको भी जळे दिया जाइछ, जो थरे की 4 people रो डेथ हेची। सो इट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, राइट? आमे जदि हिस्ट्री आमे देखिबा 2019 रे जे.एन.के डीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अंतर्गत 370 आर्टिकल को तमरो एब्रोगेट करी की लद्दाख आउ जम्मू एंड कश्मीर को अलगा करा जायतिला, हैला। सो जम्मू एंड कश्मीर को गोटे अलगा यूनियन टेरिटरी हिसाब रे कुआ गला, एंड लद्दाख भी गोटे अलगा यूनियन टेरिटरी हिसाब रे रखा गला। बट द डिफरेंस वाज दैट जम्मू एंड कश्मीर को विथ लेजिस्लेचर माने तांकर निजर लेजिस्लेचर रहिबो सेटा कुआ गला, एंड लद्दाख को गोटे यूनियन टेरिटरी तो बना गला बट विदाउट एनी लेजिस्लेचर। ओके, सो एटा ही गला गोटे फर्स्ट प्रॉब्लम कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो बनैलो बट तार कंट्रोल किए रखिबो? सेंटर ही रखिबो, तांकर निजर किछि ओपिनियंस और निजर लेजिस्लेचर किछि रहिबो नाही। दैट वाज द फर्स्ट इशू आमे कहि पारि। तो जेतो बळे सेंटर पूरा पावर नहीं जाउची, ओके, तो तांकर जो प्रॉब्लम से गोडा को किए बुझिबो? बिकॉज इट इज अ वेरी फ्रेजाइल जोन। नो डाउट एपटे तमरो बाउंड्री इश्यूज अच्छी, ओके, बिकॉज चाइना तो सब बळे आखि रहूची, राइट? तो चाइना रे जेते बळे आखि रहूची बहुत सारा टाइम रे देखिया को पाए आमे पाउछु जे कि हमर जो पर्टिकुलर बाउंड्री एरिया रहूची गोटे बफर जोन थाए, हैला। बफर जोन हैला कि ना सेटा चाइना रो जगह ना सेटा इंडिया रो जगह। सो से बफर जोन को इंडिया सेई पर्यंत जाई पारुथला। फॉर एग्जांपल सेटिकार जो लोकल पीपल रहउथले तो से माने से एरिया को जाई पारुथले, तांगर जो शेफर्ड्स माने थिले तांगर बकरी चरेबा को जाई पारुथले। बट वर्तमान से एरिया टा ना कमी कमी आसलानी। सो एमिति भी हम कहि परिबनी कि चाइना सेटा को ऑक्युपाई करदली करि सरलानी, किंतु हमर लोकल माने भी सेठी जिबा पई भी परमिशन मिलुनी, एंड बहुत हेवी एक्सटेंड रे कंस्ट्रक्शन भी होची। गवर्नमेंट इज टेलिंग कि से कंस्ट्रक्शन टा हमर बेनिफिट्स पे, बिकॉज बाउंड्री को प्रोटेक्ट करे पे सेमते कंस्ट्रक्शन से जगह रे हबा नियंत दरकार। बट देन अगेन से कंस्ट्रक्शन ए सब जगह सेठी इकोलॉजिकल डैमेज भी होची। सो ए जो डिमांड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू लेजिस्लेचर बट एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी एथरे रहउची, हैला। लेजिस्लेचर तो रहउची, जॉब भी मिलुनी। जॉब कोन पे मिलुनी? बिकॉज हमर जेमते भी ओपीएससी अछि, हैला। तो एटा हमें खास करी कि हमर ओडिसा लोक मानको को जॉब प्रोवाइड करिया पे अछि, सेमते किछि लद्दाख रे नै। लद्दाख रे तांकर किछि लेजिस्लेचर नै, तांकर किछि पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं। तो से सब असुविधा रोची जो पावर तांको 2019 पूर्वरु मिलुथला बिफोर बीइंग ए यूनियन टेरिटरी। जेतोळे तांगे जम्मू एंड कश्मीर सहित थिले तांकर निजर कल्चर को से माने प्रोटेक्ट करूथले, हैला। तांको पाखरे लैंड रो राइट्स रहउथला। 2019 परे
तांको गोटे यूनियन टेरिटरी तो आमे घोषित करदेलु बट तांकोठु आमे तांको राइट्स नेबार उद्यम करूछु कहकी से माने क्लेम करूछु. So let us dive into details about this topic. So 2019 रे, as I said, Article 370 तमरे एब्रोगेट करा जायथिला. जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रे जम्मू एंड कश्मीर आउ लद्दाख दीटा अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना गले. जम्मू एंड कश्मीर को आमे रखिलु विथ लेजिस्लेचर, तांको गोटे तांकर निजर लेजिस्लेचर आमे देलु, बट लद्दाख को आमे विदाउट लेजिस्लेचर रखि देलु. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, सो तांकर वर्तमान डिमांड होची कि तमे हमको इधर 6th शेड्यूल रे रखो. 6th शेड्यूल रे को माने अछंती वर्तमान 80 mm मन रखिबा हमें 80 mm हला. 80 mm माने कोन? से शेड्यूल रे के अछंती 80 mm माने कोन बुझिलो? 80 mm मु जो लिखिली कोन बुझुछ? एटा मन रखिया को गोटे निमोनिक हमर से शेड्यूल रे के थांती ना आसाम, मेघालय आउ त्रिपुरा, मिजोरम 80 mm हला. आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. सो ए चारिटा शेड्यूल रे ऑलरेडी अछंती. तो आंको मान को सहित लद्दाख को भी रखा जाऊ. इधर सेटा करो नले लद्दाख को तांगर लेजिस्लेचर दियो. ए दीटा ही माने डिमांड होची बेसिकली. ओके, चलो. सो जेतबे 2019 रे अनाउंस करा गला सेतबे लद्दाख वाज वेरी हैप्पी. जेमती आमे नेपाल रे भी देखिलु 2008 पर्यंत सिटी मोनार्की थिला. तापरे जेतबे डेमोक्रेसी से माने रिसीव कले दे वर वेरी हैप्पी देन. बट आमे वर्तमान करंट सिनेरियो देखुछु कोन होची. तो सेमिति लद्दाख भी वाज वेरी हैप्पी जेतबे ता यूनियन टेरिटरी घोषित करा गला, ताको जम्मू एंड कश्मीर टू अलगा करा गला. इट वाज वेरी हैप्पी. सेतबे सोनम वांगचुक निजे बीजेपी को कांग्रेचुलेट माने थैंक यू कहितले कि थैंक यू फॉर अप्रूविंग अस दिस स्टेटस. बट तापरे जो ताके किछि तो गुडी जिंस देखिथिबे देन ओनली ए डिसकंटेंट वर्तमान देखा जाउची. नले कोन पे इट इज ए पीस लविंग यूनियन टेरिटरी हमें कहि परिबा. तो सेरा गोटे पीस लविंग जगह हैला. बहुत पीसफुली लोक रुहंते सेठी निज काम रे निज व्यस्त. बट स्टिल सेठी वर्तमान माने लद्दाख इज बर्निंग मिली कुआ जाउची. सो इनिशियली यूनियन टेरिटरी स्टेटस टा को वेलकम करा गला. बट कौन पे डिसकंटेंट देखिए को मिलला कि पावर ऑफ हिल काउंसिल सिटी रिड्यूस हे गला हैला. हिल काउंसिल जो थिला सेमानकर पावर रिड्यूस हे गला. रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी श्रैंक हे गला. रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी पूरा पूरी कमी गला. एंड लैंड सेफगार्ड्स वैनिश्ड. माने लोक माने निज लैंड हो कि से एरिया रे जदी किछि लैंड विषय रे तांकर जेति की पावर थिला रिगार्डिंग से सब भी धीरे धीरे कमीबा को लागिला हैला. तो से माने निज जागा रे ही आइसोलेट हबारो फीलिंग ता तांको आसीला. सेति पे तांके एमको सब लास्ट 4 वर्ष हला एटा करूछन. एटा एबे नुह, लास्ट 4 वर्ष हला दे हैव बीन डिमांडिंग फॉर देयर इंक्लूजन इन दिस शेड्यूल. ओके, सो व्हाट आर द डिमांड्स टू बी स्पेसिफिक कि तांको गोटे फुल स्टेटहुड दिया जाओ. ओके, सो गवर्नमेंट कोन कहूची वी कैन नॉट इंक्लूड यू इन द 6th शेड्यूल बिकॉज़ 6th शेड्यूल रे हमें खाली स्टेट्स मानु के अलाउ करू. बट बीजेपी जेतबेले पावर आसीबार तांको प्रॉमिस करिथिला सेतबेले से तांको एटा भी प्रॉमिस करिथिले कि हमें तुमको 6th शेड्यूल रे रखिबु. सो व्हेन यू आर नॉट स्टैंडिंग अपन योर कमिटमेंट्स तो सेठी असुविधाटा आसी जाय कि तमे निजे कमेंट करथिलो कि हमें तुमको रखिबु 6th शेड्यूल रे. बट एबे तमे कहूचो कि तमे गोटे स्टेट ना हो तो हमको हमें तुमको केमते रखिबु 6th शेड्यूल रे. जदि तमे गोटे स्टेट ना हो देन इधर जदि हम माने लद्दाखी कहउछनी जदि हमें गोटे स्टेट ना हो देन इधर यू गिव अस द फुल स्टेटहुड. तमे हम गोटे स्टेट बना. बट देन गवर्नमेंट कहउची कि गोटे स्टेट हवा पे जेति कि रहइबा दरकार पॉपुलेशन तम बाकरे सेति कि नाही. एई सबु कंट्रोवर्सी लागि रहिछि. सो जदि फुल स्टेटहुड डिमांड करूची लद्दाख तो सेथिरे तांको लेजिस्लेटिव पावर मिलिबो. निजर लॉस से माने निजे बनै परिबे हैला. अकाउंटेबिलिटी रहइबो. तांकर रिप्रेजेंटेशन ता स्ट्रांगर रहइबो. एबे कोन दिल्ली रे रही कि लद्दाख भलिया जगार इकोनॉमिकली सेंसिटिव जगह, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह को जणे तार प्रॉब्लम्स बुझी पारिबो कि दिल्ली रे रही सेटा हला क्वेश्चन. तापरे हला 6th शेड्यूल इंक्लूजन कि 6th शेड्यूल रे तांको रखियार कमिटमेंट कोहा जाइतला किंतु तांको इंक्लूड करा जाउने. सो जेतबेले कोन पे 6th शेड्यूल हमें कहूछु ए जो 80 mm बेसिकली जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ए सब गुडा तमर ट्राइबल स्टेट्स हैला.
और लद्दाख रे भी जदि आमे देखिबा 90% पॉपुलेशन ट्राइबल को बिलोंग हैला दे आर ट्राइबल 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन लद्दाख आर ट्राइबल तो तमे तांको काहे की रखिबा नहीं सिक्स शेड्यूल अंडर रे ओके also they are demanding parliamentary representation अच्छा जदि तमे तांको सिक्स शेड्यूल रे रखुछु देन ऑब्वियसली आमे कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे तांकर सेफगार्ड टाकू जस्टिस दे पारि बिकॉज 90% ट्राइबल पॉपुलेशन से अछंती तांकर लैंड आमे एबे भी जानि गोटे ट्राइबल लैंड रे किछि कंस्ट्रक्शन करिबा एते इजी नुह तांकर प्रॉपर परमिशन दरकार पड़िबो हमकु तो जेतेबेले आमे तांको सिक्स शेड्यूल रे रखुनु आउ एते कंस्ट्रक्शन करी लागुछु दैट मींस विदाउट देयर कंसेंट विदाउट देयर प्रॉपर यू नो तांको तांको कंसर्न न नेगी सेति की कंस्ट्रक्शन होची बट जदि सेटा सिक्स शेड्यूल रे आसी जाय देन किछि भी कंस्ट्रक्शन हबा पूर्वरु तांकर प्रॉपर कंसर्न नबा निहाती दरकार पड़ी जिवो तो सेटा गोटे इश्यू हबो कि गवर्नमेंट पे दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी से माने डिमांड करूचंती कि गोटे सेपरेट लोकसभा सीट कारगिल पे हो आ गोटे राज्यसभा पे भी तांको गोटे सीट दिया जा हैला सो जदि हमें देखिबा जस्ट अ सेकंड जदि हमें देखिबा एठी तमे देखो गोटे ले एपेक्स बॉडी अछि आ गोटे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अछि तो ए दीटा अलगा अलगा जगह बेसिकली अलगा अलगा डिस्ट्रिक्ट हमें कहि परिबा विद इन द लद्दाख ले रे तमरो मोस्टली बुद्धिस्ट कम्युनिटी अछन आ कारगिल जदि हमें देखिबा तांकर पॉपुलेशन मेजरली मुस्लिम माने रहन ହେଲା ତ ସେ ଦି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ୟୁନିଟି ଆମର ସେଠି ଦେଖା ଯାଉଛି एंड पीसफुली प्रोटेस्ट करूଥିଲେ until and unless ଏଇ recently जो बीजेपी ର ऑफिस जळाई देले ता पूର୍ବରୁ सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करूଥିଲେ सो पीसफुल प्रोटेस्ट से माने करूଥିଲେ केबे भी किछि क्षति କରିବାକୁ चेष्टा करि नथिले बट कंटीन्यूअसली 4 वर्ष जाय जणे केते पीसफुल प्रोटेस्ट करिवो रिसेंटली ए सब देखिया को मिलेला एंड ले आ कारगिल से माने यूनाइटेड भाबर एटा माने प्रोटेस्ट को देखुछंती सो यूनिटी हमें मुस्लिम और बुद्धिस्ट मान को सेटे देखिया को जाउछु सो इट इज नॉट दैट खाली मुस्लिम माने ही एथरे इन्वॉल्व अछंती एंड बुद्धिस्ट माने इन्वॉल्व ना बुझी परछो जो गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग कि एटा पाकिस्तान रो इन्फ्लुएंस हे पारे और चाइना रो इन्फ्लुएंस हे पारे बट सेमती देखिया को तो सेमती किछि लागोनी क्लियर हां तुमको एटा ऐप रे मिलि जेबो नमिता आल्सो आई थिंक टेलीग्राम रे भी जॉइन कर मिलि जेबो ओके सो से माने डिमांड करूछन्ती कि गोटे कारगिल पे स्पेशल लोकसभा सीट कारगिल रे मेजरली मुस्लिम पॉपुलेशन अछन एंड गोटे राज्यसभा सीट भी तांको रखा जाय तांको पे सो दैट से माने तांको इश्यूज ता रखि परिबे गोटे प्लेटफॉर्म रे राइट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हे परिबो पब्लिक सर्विस कमिशन नाही सो पब्लिक सर्विस कमिशन गोटे रहिले तांको फेयर रिक्रुटमेंट हे परिबो लोकल रिक्रुटमेंट हे परिबो लोक मान को जी जॉब मिलुनी तो इटा गोटे प्रॉब्लम नि हाती नेपाल रे भी सेटा ही प्रॉब्लम थिला कि एक तो तांकर करप्शन मेन प्रॉब्लम थिला तापरे लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कोन सेरा भी गोटे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेटा भी गोटे कंसर्न थिला नेपाल रे से सेम जिंस एठी भी हमें देखिया पाउछ आ खास करके लैंड और जॉब सिक्योरिटी इज आल्सो वन ऑफ द की डिमांड ऑफ द लद्दाखी प्रोटेस्टर्स तो लैंड जेमति मु तुमको कहली कि जो शेफर्ड्स माने अछंती से माने तांकर बकरी चरेया पे तांको लैंड को जोडी ता से माने आगुरु जाई पारुथले सेठी जाई पारु नाहंती सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन आउटसाइडर्स परचेजिंग लैंड आउटसाइडर माने लैंड परचेज करूछंती ट्राइबल लैंड जो गुडा को मोस्टली ट्राइबल मान को मिलिया कथा सी लैंड माने आउटसाइड लोक परचेज करूछंती तो वन वे आमे गोटे ट्राइबल राइट्स को सिटी हैम्पर करूछु कि नहीं हैला प्लस हमको एम्प्लॉयमेंट भी कॉर्नर कर दोचे माने एम्प्लॉयमेंट भी मिली पारो नहीं जो माने ऑलरेडी सिटी डिसाइड करछंती से मानो सो दिस आर द की डिमांड्स ऑफ द लद्दाखी प्रोटेस्टर्स सो ता एगेंस्ट रे कि स्टेटहुड कोन पे मिली पारिबोनी लद्दाख को प्रथमे तो हला डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखिया को मिलुची हला without a legislature Ladakhis are ruled by bureaucrats under the lieutenant governor leading to lack of accountability and denial of self governance हेलो नो डाउट कि लेजिस्लेचर नहीं बट सेमान को सेंट्रली ब्यूरोक्राट लोक माने हैंडल तांकर प्रॉब्लम बुझुचंती कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सेटा को बुझुचंती देखो आसिफ विजय कुमार
लद्दाख रिलेटेड आसो कि नो आसो, इट इज ए मेजर कंसर्न फॉर इंडिया राइट नाउ, राइट? तुमको एटा नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू रे पचारि पारंती, तमर एटा मेंस रे आसीबार प्रोबेबिलिटी अछि, हैला? सो आसीबो कि नो आसीबो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज ए सिटीजन हमरो गोटे इंडिया रो एते इंपोर्टेंट जगह रे कोन पे प्रोटेस्ट होची सेटा हमको जानिबाटा निहाती दरकार पड़ी जाउची, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, तो हमें एटा अवेयर हबा कि नहीं, बुझिपल? सो डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखिया को मिलुची, कल्चरल सेफगार्ड्स, स्टेटहुड विथ सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन, जदि सिक्स शेड्यूल रे आसी गला देन तांको लैंड प्रोटेक्शन एंश्योर करिवो, जॉब मिलिबा को भी एंश्योर करि परिबो, कल्चरल सिक्योरिटी देखिया को हमें पाई परिबो, बिकॉज 90% ट्राइबल पॉपुलेशन, 90% ट्राइबल पॉपुलेशन माने सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी तांको पे बहुत इंपोर्टेंट, तांको कल्चर को हमें केते सिक्योर रखि परिबा कि नै, हला? एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जेहेतु चाइना सहित भी बॉर्डर शेयर करूची लद्दाख, पाकिस्तान सहित भी बॉर्डर शेयर करूची लद्दाख, सो बहुत इंपोर्टेंट जोन रे सेटा वर्तमान अछि, तो सेठु जदी सेंटर ऊपर ही सब पावर हमें थोपी दबा, देन लोकली गवर्नेंस कौन रोचे, आमे जो 73rd और 74th अमेंडमेंट करथिलु एक्ट, जो थरे कि हमें पंचायत राज को, म्युनिसिपैलिटी को हमें आनिलु इनटू पिक्चर कि लोकल गवर्नेंस सेठी रहू, बिकॉज सब जिनस सेंटर मैनेज करि परिबनी, देन से सब जिनस एबे काई ए क्षेत्र रे से जिनस काई हमें इवन स्टेटहुड रो मान्यता भी हमें ताको दबा पे नाराज, हमें ताको गोटे लेजिस्लेचर दबा पे नाराज, व्हाई? बिकॉज हमें 73rd 74th अमेंडमेंट रे लोकल गवर्नेंस कथा कहलु, सेति पे हमें पंचायत म्युनिसिपैलिटी ए सब आनिलु कि हमें लोअर लेवल रे फोर्थ स्टेज रे एटलीस्ट हमें केमती प्रॉपर्ली गवर्न करि परिबा, बट एठी से जिंस भी देखियो को हमें पाउनु, ओके? यूथ एस्पिरेशंस, नेपाल रे कोन हला, यूथ वायलेंस हला, कोन पे? बिकॉज सेमान को जॉब मिललानी, सेमान को माइग्रेशन देखिया को मिलथलो, सेम द केस इज विथ लद्दाख, स्टेटहुड प्रेमिसेस लोकल रिक्रूटमेंट बॉडी, स्टेटहुड प्रोमिसेस लोकल रिक्रूटमेंट बॉडी, जदि गोटे स्टेटहुड आसीबो, जेमति मु कहली हमर ओपीएससी अछि, तो सेमति लद्दाख रो गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन आसीबो, तो गोटे तांकर लोकल रिक्रूटमेंट बॉडी आसिले तांको जॉब क्रिएशन रे हेल्प करिवो, एंड इट विल प्रिवेंट एलिएनेशन एंड माइग्रेशन, सेमानको आउ बाहर को पड़ी जीवा को पड़िबनी, जो माने एजुकेटेड लद्दाखी यूथ अछंती तांको बाहर को जीवा को पड़िबनी, माइग्रेशन ता हमें रोकी परिबा जदि तांको स्टेटहुड मिले तो, एंड इट विल प्रॉमिस द फुलफिलमेंट। 2019 रे तांको कुहा जाइथिला कि तुमको गोटे हमें सिक्स शेड्यूल रे रखिबु, हला? स्टेटहुड रे मान्यता दबु, अदरवाइज हमें तुमको सिक्स शेड्यूल रे रखिबु, देन सेई जिंसटा जदि गवर्नमेंट करि पारुनी तो लोकर भरोसा टूटी जीवनी हाथी गवर्नमेंट ऊपर, बुझिपल? गोटे गवर्नमेंट गोटे भरोसा देकी भांगुची, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट ए क्षेत्र रे ए रीजन रे इट इज वेरी सेंसिटिव। Honoring government 2019 pledge strengthens democratic credibility and trust between the center and the Ladakhi people. Because जो promise रखी कि तमे power रे आसिलो, जदि तमे से promise टाको रखिबनी, then future रे you will not expect कि तुमको से गवर्नमेंट और लद्दाख पीपल माने तुमको सपोर्ट करिवे कि नहीं। ओके, सो दिस आर द आर्गुमेंट्स फॉर स्टेटहुड, कि स्टेटहुड मिलेले ताको कोन कोन बेनिफिट्स हे परिबे, एंड दिस आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट स्टेटहुड, बट गवर्नमेंट इज सेम। गवर्नमेंट कोन कहूची कि गवर्नमेंट कहूची कि जेहेतु से चाइना सहित भी बॉर्डर शेयर करूची और पाकिस्तान सहित भी बॉर्डर शेयर करूची, हैला? एलएसी भी अछि, सेठी एलओसी भी अछि, तो ए दीटा स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सेंट्रल कंट्रोल रहबा अंडर, इट शुड बी अंडर द सेंट्रल कंट्रोल, हैला? सेथि पे हमें तांको कंट्रोल दोनु, ठीक अछि, ओके, एग्रीड। जदि तमे तांको सेंटर दोनो तो एटलीस्ट यू कैन अलाउ सम लेजिस्लेटिव ना, कि किछिटा पार्लियामेंट रे तांको सीट्स हमें रखि परिबा, सो दैट दे कैन पुट अप देयर व्यूज एंड देयर कंसर्न्स, तांको प्रॉब्लम के कोठी शेयर करिवे, बुझ परछ? अराउंड 3 लाख पॉपुलेशन मे नॉट जस्टिफाई फुल स्टेटहुड, गवर्नमेंट कहूची कि तमरो पॉपुलेशन बहुत कम, तो हमें तुमको स्टेटहुड मान्यता भी दे परिबनी, बिकॉज 3 लाख पॉपुलेशन अच्छी, तो स्टेटहुड पे सेति के रहबा माने ताठो अधिक रहबा को पड़िबो। हिल काउंसिल ऑलरेडी अछि, गवर्नमेंट कहूची कि तमरो तो हिल काउंसिल ऑलरेडी अछि, तमरो ले काउंसिल अछि, तमरो कारगिल हिल काउंसिल अछि, तो सेटा तुमको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करूची, बट सेमान को पाखरे भी इंफॉर्मेशन नै कि कोन से कंस्ट्रक्शन होची, कोन पे होची, कहा लैंड रे होची, हमें काहे कि हमरो बकरी चरे पे से एरिया को जाई पारुनु, ए सब जिंस
डाउट रे रहउछन लोक माने रिस्क ऑफ फैक्शनलिज्म कि जदी आमे सेठी कलु तो मे बी जेहेतु लेयर रे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अधिका कारगिल रे मुस्लिम पॉपुलेशन अलगा तो तांको भितरे किछि तुमको डाइवर्जेंस इशू देखिया को मिली पारे गवर्नमेंट एटा भाबुछि हैला सो सेही जिंस हेले तमरो सिटी गवर्नेंस टा को डिस्टेबलाइज करिवार भी पॉसिबिलिटी रही पारुछि resource dependency heavy reliance on central funds makes full statehood financially challenging एबे भी जत्ते की फंड्स जाउछि सेंटर रु जाउछि हैला सेंट्रल फंड ऊपर ही से रिलाई करे तो सेही क्षेत्र रे जदि हमें स्टेटहुड दे दबा देन सेटा फाइनेंशियली चैलेंजिंग हे जिवो फॉर द गवर्नमेंट so these are the arguments against statehood by the government. Okay, and what government has done so far? So far government गोटे high power committee form करिछि जोटा कि तमरो ले काउंसिल सहित तमरो कारगिल काउंसिल सहित से तंगरो कथा चलीछि ओके एसटी रिजर्वेशन बढ़ी दिया जाइछि 45% टू 84% एसटी मान को रिजर्वेशन सिटी बढ़ा जाइछि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन मान को भी रखा जाइछि हिल काउंसिल ए दीटा हिल काउंसिल जे म कहले ले काउंसिल और कारगिल हिल काउंसिल ऑलरेडी अछि तो सेठी भी वुमेन मान को 1/3 रिजर्वेशन अनाउंस करिछि गवर्नमेंट भूती एंड कुर्गी दीटा को ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे भी से डिक्लेयर करी जे सो हमें तांगर कल्चर तांगर लैंग्वेज ऊपर खूब भी प्रोटेक्ट करूछु बेली गवर्नमेंट कहूची ओके एंड से माने कहउछन कि 1800 पोस्ट रिक्रूटमेंट इनिशिएट करा जाइछि ओके सो दिस आर द गवर्नमेंट्स एफर्ट सो फार सो जदी एमती वायलेंस कंटिन्यू रुहे ओके तो यूनिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम स्ट्रेंथन्स द कॉज बट वायलेंस रिस्क कम्युनल फ्रिक्शन भी देखिया को मिली पारे एंड जेमिति आमे जेंजी रिवोल्यूशन देखिलु नेपाल रे सेमिति भी हबार चांसेस रहउछि टूरिज्म ऊपर निहाती फरक पड़ियो बिकॉज जदी वायलेंस रो प्रॉब्लम आमे जम्मू एंड कश्मीर भी जिबा पे कोन पे डरुछु बिकॉज ऑफ ऑल दिस वायलेंस ना बट लद्दाख हमें पीसफुली जाई पारुथुनु बट एबे सेटा भी पॉसिबल हे पाने बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस तो एमिति जदी वायलेंस कंटिन्यू कला से इकोनॉमी को भी हर्ट करूची इको टूरिज्म को भी से माने अफेक्ट करबो आ पश्मीना ट्रेड को भी अफेक्ट करबो पश्मीना वूल जोटा हमें पाउछु लद्दाख को हेले सेटा भी इशू हे परिबो बुझ पलो नेक्स्ट इंडिया ऊपर कौन तार वायलेंस ओवरऑली हमरो एज सेंट्रली इंडिया ऊपर कौन प्रभाव पड़ी परिबो सिक्योरिटी कंसर्न हिसाब रे बहुत कौन पे एज आई सेड कि से चाइना सहित भी बॉर्डर शेयर करूछ पाकिस्तान सहित भी बॉर्डर शेयर करूछ यदि सेही जगह रे इमिडिया प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म में देखिया को मिले तो देयर मे बी चांस कि चाइना पाकिस्तान किछि ओडे से तांकर गेम खेली दे पारिबे हला फेडरलिज्म डिबेट डिवाइव्स क्वेश्चंस ऑन सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी तो सेंटर ता माने हैंडल करि पर यूनियन टेरिटरी को तो एटा ओडे क्वेश्चन मार्क फॉर द सेंटर एज वेल जे हमें फेडरलिज्म एते कहूछु ता ऊपर एटा ओडे क्वेश्चन हे जाउछ यूनियन टेरिटरी को सेंटर हैंडल करि पारनी बेली कि प्रोटेस्ट देखिया को हमें पाउछु सेति में से माने शेड्यूल डिमांड करूछन स्टेटहुड डिमांड करूछन ओके पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट इमेज निहाती इफेक्ट हबो तमे जदी प्रोमिसेस रखी पारनो निजरो देन तमरो सेठी तम इमेज ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बीजेपी ऊपर एठी गोटे क्वेश्चन मार्क पड़ी जाउछि डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी ग्लोबल अटेंशन ऑन अनरेस्ट इन ए कंटेस्टेड रीजन हला जोठी तमे एते भलो से जीतिथिलो हला गुड मॉर्निंग सुनीता एते बढ़िया से जीतिथिलो से माने खुशी थिले ताको गोटे यूनियन टेरिटरी हिसाब रे मान्यता देला परे सेठी एते प्रोटेस्ट देखिया को मिलुछि तो दिस आर ऑल द कंसर्न्स नाउ सो कौन करा जाय परिबो जेमति मु तुमको कहली एलएबी और केडीए कौन आई होप यू आर क्लियर विथ इट नाउ कि एलएबी और केडीए होचे हमरो लेह एपेक्स बॉडी आ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जोटा कि अलग अलग सिटी काउंसिल एग्जिस्ट करंती तो तांको सहित कंटिन्यू करिवो कथावार्ता आ क्लियर टाइमलाइन तांको दबो कि केमते कोन करिवो कोन केमिति इशूटा को सॉल्व करिवो एनहांस्ड ऑटोनॉमी डिवॉल्व मोर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर टू हिल काउंसिल जो ले काउंसिल अछि कारगिल काउंसिल अछि तांको तमे अधिक लेजिस्लेटिव पावर दियो फाइनेंशियल पावर दियो
पार्शियल शिफ्ट शेड्यूल जदि तमे पूरा शिफ्ट शेड्यूल भी दे पारनो पार्शियल शिफ्ट शेड्यूल एटलीस्ट दियो कि तमे सिलेक्टिव एप्लीकेशन एमती गोटे करो कि तांकर लैंड को सेमाने केमसे प्रोटेक्ट करि परिबे एटलीस्ट कि किछि भी कंस्ट्रक्शन हबा पूर्वरु तांकर सहमति निहाती रहिबा दरकार एंड तांको जॉब्स भी से क्षेत्र रे मिलिबा दरकार जदि तमे किछि सिटी डेवलपमेंट करूचो सेठी लोकल यूथ रो जॉब निहाती एंश्योर करबा दरकार ओके आ बाकी तमे जो सिक्योरिटी कथा कहूचो जेहेतु से पाकिस्तान सहित आउ चाइना सहित बॉर्डर शेयर करूचो तो सिक्योरिटी इश्यू रहउची तो सेटा तमे संभाळो बट तांको लैंड आ जॉब दायित्व तांको दियो बुझी पारलो यूथ एंगेजमेंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट स्कीम लद्दाख पे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम आनो इको टूरिज्म को बूस्ट करिया पे चेष्टा करो बिकॉज सेथरे मोस्टली तांकर लाइवलीहुड भी डिपेंड करे राइट एंड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करिया पे चेष्टा करो एंड ट्राई टू मेक ए बैलेंस्ड अप्रोच कि तमे लद्दाखी मानकर आइडेंटिटी को सेफगार्ड केमते करिवो विदाउट अंडरमाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज ओके सो रिसेंटली सोनम वांगचुक को जो गिरफ्त करा जायछि एमिति नुह कि तांको इजिली बेल मिल जेबो जो माने नेशनली वे रे तांको जो डिटेन करा हेछि तो तांको बेल मिलियाटे भी इजी नुह एंड ही इज नॉट अ देशद्रोही सेमिति भी आमे तांको बिहेव करिया दरकार नु बिकॉज़ से पीसफुल प्रोटेस्ट करिथिले ହେଲା ସେ ପିसफुल आमे देखि आछे से एते वर्ष होला पीसफुली प्रोटेस्ट करि आछिले तो एई जो जिंसटा करूची गवर्नमेंट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी लोक मानकर अलग अलग ओपिनियंस थाई पारे ओके सो कंक्लूजन जदि आमे देखिबा लद्दाख रो एजिटेशन इट रिफ्लेक्ट्स द क्लैश बिटवीन डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस बहुत रोची कि हमको स्टेटहुड मिलू हमको शेड्यूल मिलू ता सहित नेशनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग एटा बहुत इंपोर्टेंट हे जाउची बिकॉज़ से एते इंटीग्रेट एते डेलिकेट जगह रे तार लोकेशन टा रोची एंड दिस मूवमेंट हैज यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटी हैला बट नो डाउट डाइवर्स कम्युनिटी यूनाइट करछि माने बुद्धिस्ट कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी समस्त यूनाइट है कि पार्टिसिपेट करूचंती बट वायलेंस रिस्क्स लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी एंड गोटे मिडिल पाथ हमको बाहर करने को पड़िबो जोथरे हमें तांकर कल्चर को और तांको कल्चर को सेफगार्ड करिबा तांकर आइडेंटिटी को सेफगार्ड करिबा यूथ मान को सेठी जॉब क्रिएशन रे हेल्प करिबा तांको एम्पावरमेंट केमते हमें देखिबा से जिंसटा कले ही हमें सेठी बैलेंस करि परिबा पीपल मानकर एस्पिरेशन आ इंडिया रो इंटरेस्ट माने काहाकू ना गवर्नमेंट ऊपर भी गोटे आंच आसी जाओ कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज थ्रू द सेंटर से क्वेश्चन रो गोटे अंत मिलू एंड जोटा एक्चुअली कंसर्न्स अछि लद्दाखी मानकर सेटा भी केमते हमें एड्रेस करि परिबा दैट इज द ओवरऑल पिक्चर ओवर हियर नाउ आर यू क्लियर why is this Ladakh protest going on and what government is doing, what it has done, what it can do and everything. Idea मिलला ठीक है इतनी बकबक मु हेली किछ आइडिया मिलला यस चलो देखिए नेक्स्ट कौन अछि सो जेतरा हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूथुलु किछरा तमे लेक्चर देखिथिबो एमती किछि योजना आसे कि से योजना को गवर्नमेंट अनाउंस करे छी हैला सो वर्तमान मन रखिया में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना इट इज बाय द हरियाणा गवर्नमेंट एंड से स्कीम अंडर रे तमरो वुमेन मानु को 2100 रुपीस मिलेबो थ्रू द डीबीटी एवरी मंथ तंको मिलेबो 2100 टंका ओके तो तार गोटे मोबाइल ऐप भी लॉन्च हेची दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना वुमेन मान को मिलेबो को वुमेन मान को मिलेबो यस सुनीता बिकॉज तमे लेट रे जॉइन करलो तो तुमको मे बी टिके टिके बुझा पड़िला क्लास सरला परे स्टार्टिंग रू एटा आउट के देखि दबो ए पोर्शन टा ओके सो के एलिजिबल लाडो लक्ष्मी योजना पे एटलीस्ट 23 इयर्स हेतिबा दरकार और एबव माने एटलीस्ट 23 इयर्स हेतिबा दरकार एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड मैक्सिमम एज लिमिट अछि 60 इयर्स maximum age limit 60 years family income annual income should not be more than 1 lakh हैला आउ तमरो she must be a resident of Haryana for at least 15 years okay आ जदी से मैरी भी करिछि then माने तार husband should be a resident for at least 15 years हैला बैंक अकाउंट निज नारे हबा दरकार
एतिकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तमरो रहउची लाडो लक्ष्मी योजना पे। सो हमें बेसिकली मन रखिबा एटा हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस करिछि। सो जेमिति हमर सुभद्रा योजना एठी तांगर मंथली 2100 टका दिया जिवो वुमेन। एज लिमिट हला 23 to 60। ओके, नेक्स्ट। Ahead of COP30 Brazil, India to release its climate action plan। ओके, सो प्रति वर्ष तमरो कॉप ऑर्गेनाइज हुए। कॉप कोन? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो लास्ट ईयर कॉप तमरो हेथिला कोठी? अजरबैजान रे हेथिला। अजरबैजान रे हेथिला कॉप 29 एंड कॉप 30 जोटा कि हमरो ए नवंबर रे हबार अछि एंड सेटा हमरो ब्राजील रे हबार अछि। बेलेम ब्राजील रे कॉप 30 हबार अछि। सो सेटा हबा पूर्वरु इंडिया वर्तमान रिलीज करियर अछि तारो क्लाइमेट एक्शन प्लान। सो प्रति 5 वर्ष रे हला कॉप 30 प्रति वर्ष हुए, किंतु प्रति 5 वर्ष रे जो माने भी तमरो एठी कंट्रीज अछंती हला से माने गुटे एनडीसी दियंती। एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नेक्स्ट 5 वर्ष रो टारगेट से माने स्पेसिफाई करंती। सो लास्ट 2020 रे परिवार थिला हम 2022 रे हम टारगेट्स देइथिलु कि 2025 रो हम टारगेट्स कोन हबार अछि। एबे 2025 हैला, एबे हम 2030 रो टारगेट्स तंगु देखैबु। 2030 रो टारगेट्स और 2035 रो टारगेट्स भी हमें शो करिवु कि हमें केति की अचीव करि पालु आ हमरो नेक्स्ट 5 ईयर रो टारगेट कोन विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। हेलो, सो हम मन थेबो तमरो पेरिस एग्रीमेंट हेतिला 2015 रे। पेरिस एग्रीमेंट को एटा स्टार्ट हेची। ए जो एनडीसी मु कोइली तमगु नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 रो पेरिस एग्रीमेंट परठो एटा स्टार्ट हेची कि प्रति 5 वर्ष रे तमरो प्रति कंट्री से माने तांगर स्पेसिफाई करिवे कोन तांगर प्लान रहउची नेक्स्ट 5 ईयर रो। एंड दिस इज द थर्ड एनडीसी। 2015 रे थरे हेतिबो फर्स्ट, तापर 2020 रे हेतिबो एंड 2025 रे एटा थर्ड एनडीसी हबाबु जाउची। ओके, सो इंडिया विल सबमिट updated nationally determined contribution at the UN climate change conference, UNCCC climate change conference, and जोटा कि हमरो ब्राजील रे हबा को जाउची नवंबर 10 रे। ओके, एंड वी आर likely to have higher target for energy efficiency। किछिटा तमे न्यूज हमें लास्ट किछिटा पूर्व क्लास रे पढिथिलु कि हमरो जो 2025 रो टारगेट थिला और 2030 रो भी जो टारगेट हमें देथिलु, एबे जेमते हमें 2030 रो ता बियॉन्ड रो टारगेट्स भी दबु। तो वर्तमान जदि हमें देखियो 2030 रो टारगेट्स भी हमें 5 वर्ष पूर्वरु बहुत सारा टारगेट हमें अचीव करि पारिछु। हैला, बहुतटा करि भी पारनु, बट बहुत सारा जिंस हमें करि पारछु। इन द फॉसिल फ्यूल को हम यूज करि पारछु हैला एज अल्टरनेटिव सोर्स। एमती बहुत सारा जिंस हमें करि सारलुनी ऑलरेडी। सो एबे जो हमर अपडेट रहिबो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, दिस इज 3.0 कोन पे बिकॉज़ 2015 रे हितला, 2020 रे हितला एंड वर्तमान 2025 रे थर्ड एडिशन हबा को जाउची नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एंड दिस विल बी ए रोड मैप बियॉन्ड 2030 टू 2035 रो टारगेट्स कोन कोन रहिबो। एंड एटा एमती गोटे टाइम रे आछी जोथरे कि हमरो ग्लोबल क्लाइमेट एम्बिशन बहुत inadequate अच्छी with major economics delaying or lowering their commitments। So main proposal जदि हमें देखिबा मु कहली कोप मीटिंग्स तमन प्रति वर्ष हुए हला। लास्ट वर्ष हेतिला अजरबैजान रे, ए वर्ष हबार अछि ब्राजील रे हला। सो अजरबैजान रो खास करके बाकू रे हेतिला कोप 29 जदि तमे मन रखिबो एंड कोप 28 हमरो दुबई रे हेतिला। ता पूर्व वर्ष यूएई दुबई रे हेतिला हला। सॉरी, सो पेरिस एग्रीमेंट तो एक्चुअली हेतिला 2015 रे हला। तो आमे कोन क्लाइमेट चेंज विषय 2015 रु ही भाबीबा स्टार्ट करलु या ता पूर्व रु भी भाबुथुला। ता पूर्व रु भी मैं भाबिथिलु, बट ए जो एनडीसी रा तमरो स्टार्ट हैला 2015 एटा मन रखिबो हला। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एटा तमरो स्टार्ट हेछि पेरिस एग्रीमेंट 2015 रु स्टार्ट हेछि, जोथरे कि सब कंट्री माने वॉलंटरीली तांगरो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्लाइमेट एक्शन रिगार्डिंग तांगरो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान सेरी से माने देबे। सो मेन गोल थिला पेरिस एग्रीमेंट रो कि ग्लोबल वार्मिंग रहिबा कथा लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 5 डिग्री सेल्सियस फॉर अबव प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल्स, एंड कंट्रीज मस्ट अपडेट देयर एनडीसीज एवरी 5 years। ओके,
इंडिया प्रीवियसली 2022 रे देइथिला 2020 रे दबार थिला बट 2022 रे इंडिया तारो कमिटमेंट देइथिला जोथरे कि तारो कमिटमेंट थिला टू रिड्यूस एमिशंस बाय 45% एंड जोटा कि ऑलरेडी इंडिया अचीव करि सारछि also to source 50% of electric power capacity from non-fossil fuel माने 50% इलेक्ट्रिक पावर हमें नॉन फॉसिल फ्यूल रु केमती सोर्स करि परिबा सेटा भी हमें ऑलमोस्ट अचीव करि सारिछु ओके create an additional carbon sink of at least 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide आउ by 2019 जदि हमें देखिबा emissions intensity fell 33% June 24 रे 50% power capacity came from the non-fossil fuels. माने एटा जे हमें कहितलु कि by 2030 हमें 50% इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करिबु नॉन फॉसिल फ्यूल रु सेटा हमें 2024 सुधा ही करि सारिथिलु हला so these are the commitments previous commitment and expected next 5 year रो हमर कमिटमेंट कोन हबाकू जाउची हमें आउटी को अधिक टारगेट देबु ए सब जिंस पे हला and extension of commitments to 2035 so 2035 में हमें 10 वर्ष आगुआ भावुछु aligning with the global climate roadmap and use of India carbon market by 2026 जोथरे हमें रेगुलेट करि परिबा ट्रेड एमिशंस रिडक्शन अक्रॉस 13 मेजर सेक्टर्स हला सो दिस आर द फ्यूचर एडिशंस जोटा कि हमें एबे जो क्लाइमेट एक्शन प्लान इंडिया दबा को जाउती जोथरे हमें आउट के ए सब क्षेत्र रे माने फॉसिल फ्यूल रो यूज आउ तमरो जीडीपी हिसाब रे एमिशन को रिडक्शन ए सब जिंस हमें आउट के हायर टारगेट्स रखिबा हला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विषय टिके जानिबा एज आई सेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रति वर्ष हुए एंड इट इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ कहार यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तार गोटे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होची सीओपी एंड सेटा केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला 1994 रे सीओपी एस्टैब्लिश करा जायतिला जेतबेले यूएनएफसीसी तमरो फोर्स रे आसीथिले एंड सेथिरे जेतिके भी कंट्रीज तमरो एथिरे पार्टिसिपेट करन यूएनएफसीसी रे से माने कॉप मीटिंग्स रे भी प्रति वर्ष पार्टिसिपेट करिवे ओके सो आगुर पेरिस एग्रीमेंट 2015 रु आसिला जेंति मु कहली ता पूर्वरु 1997 रे हमर क्योटो प्रोटोकॉल हितिला हेलो तो 1994 रे यूएनएफसीसी कोर्स रे आसिला 1997 रे क्योटो प्रोटोकॉल हितिला सेबेटु ही प्रति वर्ष किछि ना किछि तारो माने केते आगुआ अछि एनी कंट्री तांकर प्रोग्रेस टाको मॉनिटर करिया पे एई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुए प्रति वर्ष और सेथिरे मॉनिटर करा जाय वेदर कंट्रीज आर मीटिंग देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स और नॉट ओके सो दिस सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन on global climate target finance and technology transfer okay गोटे इश्यू ये वर्तमान होची वर्तमान गोटे बड़ इश्यू देखिया को मिलची फाइनेंस कि ए जो कहूची यूएनएफसीसी कि तमे 5 वर्ष टारगेट दियो ये दियो बट ता पे सब कंट्री माने डिमांड करछुंदी कि तांको प्रॉपर फाइनेंस भी दिया जाय नॉट इन टर्म्स ऑफ लोन हला लोन हिसाब रे नो बट तांको माने कोन प्रॉपर फाइनेंस तांको दिया जाय हला से सबटा प्रति कंट्री एठी तमरा क्लेम करूछ सेटा एंड कॉप जोटा हमरो एज आई सेड प्रति वर्ष से माने मीट करंती एंड अलगा अलगा जो मेंबर कंट्री थिबे प्रति वर्ष से माने ताको होस्ट करंती सो 2025 को के होस्ट करूची ब्राजील इज होस्टिंग ओके इन नवंबर ओके एंड जो वर्ष जे होस्ट कंट्री थिबो से वर्ष से प्रेसिडेंसी भी अज्यूम करिवो ओके एंड डिसीजंस आर मेड बाय कंसेंसस जोथि पई कि तमरो प्रोग्रेस टा स्लो देखिया को मिले ग्लोबली ओके सो जदि एज आई सेड 2015 रे सेना पेरिस एग्रीमेंट आस्थिला 1997 रे थर्ड सीओपी हेतिला 1994 रे एटा स्टार्ट हेतिला यूएनएफसीसी फॉर्म हेतिला तापर 1994 रु ही कॉप स्टार्ट हेतिला कॉप रो थर्ड सेशन हेतिला 1997 रे जेतबेले हमें क्योटो प्रोटोकॉल देखिया को पाइथिलु जोटा कि हमर क्योटो जापान रे हेतिला हल तो सेही टाइम रे क्योटो प्रोटोकॉल टा भी साइन हेतिला जोथरे हमें एमिशन बाइंडिंग एमिशन कट्स करथिलु फॉर डेवलप्ड नेशंस ओके एंड कॉप 15 भी गोटे इंपोर्टेंट जोटा कोपेनहेगन रे हेतिला 2009 रे सेतो बळे हमें ए जो 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट टाको रिकॉग्नाइज करिथिलु बट सेमते किछि बाइंडिंग डील हे नथिला आ जदी कॉप 21 कथा देखिबा जोटा कि पेरिस रे हेतिला जोटा को हमें पेरिस एग्रीमेंट भी कहूछु सो इट वाज यूनिवर्सल वॉलंटरीली बॉटम अप कमिटमेंट्स एनडीसी फॉर्म हेतिला हमरो हैला पेरिस एग्रीमेंट रे एटा मन रखिबो एनडीसी केबे फॉर्म हेतिला
2021 रे ग्लासगो रे हेतिला COP26 सेतबेले आमे ए जो इंडिया रो कहन बाय 2070 हमरो नेट जीरो टार्गेट अछि बाय 2070 एरा हम केबे कहिथिलु एटा 2021 रो COP26 रे हम एटा कहिथिलु फर्स्ट टाइम फेजिंग डाउन ऑफ कोल एंड नेट जीरो प्लेजेस सबु माने सबु कंट्री तो नो मेनी नेशंस से माने नेट जीरो आमे कंट्रीब्यूट करिवु बाय 2070 ओके एटा हमें टारगेट रखिथिलु and this time it is on Brazil 2025 रे Brazil करूची which is focusing on accessing gaps in past NDC achievement तो को कंट्री तांकर NDC अचीव करि परिछि केति कि न करि परिछि सेटा को से एसेस करिवो and it will push for enhanced ambition for 2035 next 10 वर्ष रे कोन टारगेट अछि 5 वर्ष रे 10 वर्ष रे टारगेट and importance of finance and technology transfer for developing countries finance इति important hi अछि ओके तो जितने की भी हमरो सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हला ब्रिक्स हला जितने की भी मीटिंग होची आमे सिटी फाइनेंस विषय रे गुटे निहाती रखुछु कि प्रॉपर फाइनेंसिंग न हेले किछि जिंस हे परिबनी तो सेम एठी भी प्रॉपर फाइनेंसिंग सब कंट्रीज को न हेले डेवलपिंग कंट्रीज को खास करके फाइनेंस क्षेत्र रे भी टिका हमको हेल्प करिया को पड़ेबो and it is expected to shape the global stocktake of progress under the Paris Agreement. Okay, so India's updated NDC at COP30 represent both a continuity and an enhancement of its climate commitments. So challenges तो रोज निहाती फाइनेंस क्षेत्र में जेमते कहली टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे इंप्लीमेंटेशन रे सब challenges तो रोज बट केमिति हमें ताको डील करूछु बायलैटरल एग्रीमेंट्स करूछु सेटा हम पे गोटे पाइवटल फैक्टर हे जाउची ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस ओके सो रियल टेस्ट हमर एटा लाइक होछि कि हमें केते दूर जदी भी किछि हमें टारगेट रखुछु हमें केते दूर ताको अचीव करि परछु केते की ताको इंप्लीमेंट करि परछु एंड बाय 2035 हमें केते की अचीव करि परछु सो रियलिस्टिक टारगेट हमको सेट करिया को पड़िबो वर्तमान बिकॉज़ हमें वर्तमान ऑलरेडी आगु अछु हैला तो एई क्षेत्र रे केते आगु हमें आ जाई परिबा दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग क्लियर सो कोठी हेबाक जाउची हमर कप 30 कोठी हेबाक जाउची कप 30 गोटे तमे सुनिथिबो बाकू टू बेलेम रोड मैप बाकू टू बेलेम रोड मैप इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय कॉप 29 और कॉप 30 हैला माने बाकू कोठी बाकू हेतिला हमरो लास्ट 29 कॉप 29 जोटी हेतिला बेलेम हमरो ब्राजील बेलेम इज इन ब्राजील जोटी वर्तमान एटा हबाकू जाउची कॉप 30 तो तांकर रोड मैप गोटे दी जण कॉप 29 रो पार्टीज कॉप 30 से माने गोटे जॉइंट इनिशिएटिव नेथिले जोथरे कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग ऊपर टिके डेवलप माने फोकस तांकर मेजर रहूची ओके फाइनेंस एते हम टारगेट रखुछु ता पे फाइनेंस कोठु आसीबो ओके नेक्स्ट इंडिया's first ever railway link to Bhutan ओके इंडिया रो भूटान सहित फर्स्ट एवर रेलवे लिंक आ इवन इटा भूटान रो भी फर्स्ट एवर रेलवे लिंक बिकॉज ऑफ द माने भूटान रो भी एते इजी नुह सेठी रेलवे कंस्ट्रक्ट करिबा हैला भूटान रो जो देखिबा हमें खास करिकी माउंटेनियस टेरेन हमें देखिया को जाओ माने पाओ भूटान रे माउंटेनियस टेरेन भूटान रे हमें बहुत देखिया को पाओ तो सेई जगह रे रेलवे कंस्ट्रक्शन हेबाटा टिके कष्ट हे जाए तो सेति में भूटान रे रोड कनेक्टिविटी बढ़िया अछि हैला फ्लाइट भी जाए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी अछि किंतु देखिया को गले रेलवे कनेक्टिविटी भूटान रे हमें पाउना हैला तो सेटा वर्तमान गोटे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट अछि which is a 69 kilometer railway line between India and Bhutan जाको गोटे स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट अंडर रे रखा जाओ कहि कि ताको वर्तमान सेटा न्यूज रे अछि हैला तो कोठु से हबा को जाउची कोकराझार इज इन आसाम आसाम रो कनेक्ट करबो सेटा भूटान को तो भूटान आमी जानि छु भूटान इज ए डिफरेंट कंट्री तो हम कंट्री रो हम आउट कंट्री को बाय
रेलवे रे केमती जाई परिबो एंड दिस इज द फर्स्ट रेलवे लाइन इवन फॉर दैट कंट्री आल्सो सेति में एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली एंड सेति में ताको स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट अंडर रे रखियारो decision ହେଇଛି. Okay, so the Northern Frontier Railway issued the notification this week under the Railway Act 1989 ଯୋଉଥିରେ କି ତାକୁ priority list ରେ ରଖାଯିବ because it is a part of the government's Act East Policy. Act East Policy ମାନେ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉପରେ ରଖିପାରିବୁ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଛି. ସୋ when we are talking about eastern connectivity ତ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ସ କୁ ଅଲଗା କନେକ୍ଟ ଦେଶ ସହିତ ବି ଯଦି ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବା ହେଲା. ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲୁ ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ମିଜୋରାମର ଫର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲୁ ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୁଟାନ. ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା as I said କୋକରାଝର which is in Assam to ଗେଲେଫିକୁ ଏଇଟା ଯିବ. ସୋ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ this is your କୋକରାଝର which is in Assam and this is the Gelefu which is in Bhutan. Okay, so ଏଠି ଇଆଡେ ଭୁଟାନ ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁ ଇଆଡେ ତିବ୍ବତ ଅଛି ଇଆଡେ ତମର ସିକିମ ଅଛି ହେଲା. ସିକିମ ର ଓନ୍ଲି ଏତିକି ପୋର୍ସନ କି ଭୁଟାନ ସହିତ ଅଛି. ଓକେ, and ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା this is the Assam border. Okay, and you have here we have the Arunachal Pradesh I guess. ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି and କୋକରାଝର ଠୁ ଗେଲେଫିକୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରିବ. Okay, so it is India's first ever railway link to Bhutan and आपको गोटे special railway project हिसाब रे declare करा जाइछि by the Indian Railways. So it is a cross-border railway project connecting Kokrajhar in Assam with Gelefu in Bhutan and it aims to provide Bhutan its first railway connectivity. Bhutan ro first railway connectivity हबाक जाउछि एटा. So it will naturally depend the bilateral ties between India and Bhutan. Okay, so Bhutan is a friendly country. ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁश्मनी ନାହିଁ as we know. So who are the organizations that are involved in this project? It is implemented by the Northeast Frontier Railway under the Railway Act 1989, supported by the Government of India in alignment with the Act East Policy. Act East Policy माने ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛୁ. ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ କେମିତି ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା. ଓକେ, ମେଜର ଫୋକସ ଆମେ ଏଥିରେ କରୁଛୁ. ସୋ ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିକି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମେଜର ଏମ୍. ଓକେ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ ଭୁଟାନ ସହିତ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ନିହାତି ହବ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେସିଲିଟେଡ ହବ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେସିଲିଟି ବଢିବ ଟୁରିଜିମ ବଢିବ ହେଲା. ଲୋକ ଭୁଟାନ ରୁ ବି ଏଠୁକୁ ଆସିପାରିବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁ ଲୋକ ଭୁଟାନ ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ ହେଲା ବାଇ ରେଲୱେ ମାଧ୍ୟମରେ and people to people contact ବି ବଢିବ. ଓକେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହବ. ଓକେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ୍ strengthens the India's frontier infrastructure in the north east. So it is ତାର ମାନେ ତା କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3,500 crore approximately ତାର କଷ୍ଟ ରହିଛି. 6ଟା ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ହବ କୋକରାଝର ଆଉ ଗେଲେଫୁ ଭିତରେ ବାଲାଜାନ ଗାରୁଭାଷା ରୁନିଖାଟା ଶାନ୍ତିପୁର ଦାଦଗିରି ଆଉ ଗେଲେଫୁ ଏଇ 6ଟା ଷ୍ଟେସନ ବନାଯିବ and ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ ରୋଡ ଓଭରବ୍ରିଜ ରହିବ 39 ରୋଡ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜେସ୍ ରହିବ ଆଉ 2ଟା ବାୟୋଡକ୍ଟ ବନାଯିବ 11 ମିଟର each for safe passage across difficult terrains. Okay, so as I said this is the first railway link for Bhutan. Okay, Bhutan ro infrastructure development ro ଗୋଟେ historic step এটা নিহাতি and it is a boost to the Act East policy, improves the Northeast India's integration with South Asia and it will also act as a regional or a regional trade hub. तो फास्टर गुड मुवमेंट्स हमें देखिବାକୁ ପାଇବା इंडिया और भूटान ଭିତରେ ट्रेड और कॉमर्स रे भी बहुत भलो इंप्रूवमेंट देखिବାକୁ मिलिବ. Okay, so this was all about your Kokrajhar Gelefu railway link project. Okay, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ନ୍ୟୁଜ ରେ ରଖିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ର ଲୋକେସନ. ସୋ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କୋଉଠି ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି?
କମନ୍ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ କୋଉଠି ଅଛି? ଓଡିଶାରେ ଅଛି ବୋଧେ? ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଟୁ ବି ସ୍ପେସିଫିକ? ଜଲ୍ଦି ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍। Yes, it is in ଗଜପତି district. To be specific, ଗଜପତି district ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ବି ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବୁ। ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ environmentalist has flagged unchecked tourism push in ecologically sensitive Mahendragiri hills. କଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି? ଶ୍ରୀଧର ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ, ଗଜପତିରେ ଅଛି ହେଲା। Okay. So basically, while animal population have already seen decline in recent year due to the tourism development. So 2022 ରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା 2022 ରେ। ଓକେ, ହେରିଟେଜ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ 2022 ରେ। ତ ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ମେଜରଲି ମାନେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ट्रीट करवा कथा बट एक्चुअली कौन होची कि टूरिज्म बहुत बढ़ी जाउची, टूरिज्म रो चेक रहुनी हला अनचेक टूरिज्म जोगु आउ रैपिड कंस्ट्रक्शन जोगु गोटे जेहेतु एटा गोटे एते सेंसिटिव जगह हला एते सेंसिटिव जगह बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फॉना माने एते रिच फ्लोरा एंड फॉना थिबारु ही ताको हमें बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हिसाब रे घोषणा करलु। तो इट इज ए इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन रे जति हमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करिबा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कला माने कोन हबो डिफोरेस्टेशन तो निहाती हबो। डिफोरेस्टेशन जदि आमे करिबा देन वाइल्ड लाइफ तो निहाती कमिबो ना। तो जो प्रकार वाइल्ड लाइफ सेठी अछंती हैला तो से भितर बहुत सारा तमरा एंडेमिक स्पीसीज भी सेठी अछंती हैला। एलिफेंट्स अछंती, टाइगर्स अछंती, तो सेमानकर पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हबा को देखा जाउची हमर महेंद्रगिरी रे। सेठी पे एनवायरमेंटलिस्ट माने गोटे कंसर्न रेस करिसंती कि टूरिज्म को चेक करा जाओ आउ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी चेक करा जाओ बिकॉज इट इज अ इकोलॉजिकली fragile region of Odisha, threatening its biodiversity despite its biodiversity heritage since 2022. Okay, so as we know, Mahendragiri Hill is a mountain range of the Eastern Ghat and mythologically भी तार importance रही आमे रामायण रे महाभारत रे भी ए पहाड़ विषय शुनिछु एंड कल्चरली तार इंपोर्टेंस रही बिकॉज तमर से बहुत प्रत्यक्ष मंदिर गुड़ाक अच्छी महाशिवरात्रि रे सेठी बहुत भीड़ भी हुए से जगह रे एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छी बिकॉज हमें से बहुत एंडेमिक स्पीसीज पाउछु हैला। इट इज रिच इन फ्लोरा एंड फॉना, एलिफेंट्स टाइगर्स हमें से देखिया को पाइथिलु बट वर्तमान तांकर पॉपुलेशन डिक्रीज हे चलिछि हैला। देन वी हैव that 2022 रे हमें ताको गोटे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हिसाब रे डिक्लेयर करिथिलु बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फॉना। लोकेशन जदि हमें देखिबो इट इज सिचुएटेड इन गजपति डिस्ट्रिक्ट ओडिशा at an elevation of 1501 meter. Okay, and it is about 175 kilometer from Berhampur as well. Okay, Berhampur to 175 kilometer दूर अच्छे and to be specific Gajapati district rate अच्छी in the middle of the eastern Ghats. Okay, so as I said, it is a home to 1348 plant species and 388 animal species. तो इतने रिच इन फ्लोरा एंड फॉना एंड सेथरे बहुत एंडेमिक और थ्रेटेन्ड स्पीसीज भी सेथरे अछंती हैला। तो सेथि पे तांकर प्रोटेक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट बट हमें तांकर प्रोटेक्शन हबा माने प्रोटेक्शन करबा बजाय रे हमें तांकर एक्सटेंशन पे हमर हाथ रहउची से टाइप रो एठी हे जाउची। सो कल्चरल हेरिटेज मु जेमति तुमको कहली ताको हमें महेंद्र पर्वत नारे भी जानू, रामायण महाभारत रे देखि माने सुनिया को पाइथिबो and also it is also believed to be a site of Lord Parshurama's penance. Okay, and सेठी तमरो पंच पांडव मंदिर भी अछि जोथरे शिवम को पूजा करा जाय and thousands of pilgrim हमर महाशिवरात्रि रे हम सेठी देखिया को पाऊ। आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस हैला सेठी हमें
सौरा एंड कंध ट्राइब्स मान को भी आमे देखिबा को पाऊ एंड दिस सौरा एंड कंध ट्राइब आर अंडर द पीवीटीजीस बहुत सारा क्लासेस रे आमे पढी छु पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और टोटल इंडिया रे हमर 75 टा ग्रुप्स अछंती ते भितरु 13 टा ग्रुप हमर ओडिसा रे अछंती राइट 75 टा इंडिया रे थिला बळे 13 टा ग्रुप ओडिसा रे अछंती एंड से 13 टा ग्रुप भितरु ए सौरा ट्राइब कंध ट्राइब आर अंडर द पीवीटीजीस ओके तो सेमाने भी स्थिति रुहंती तो सेमाने कहा ऊपर डिपेंडेंट होतबे निहाती सेमाने फॉरेस्ट ऊपर डिपेंडेंट होतबे पर जदी हमें रैपिड कंस्ट्रक्शन सिटी करूछु देन हमें फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करूछु तो जदी हम डिफॉरेस्टेशन करूछु देन इनडायरेक्टली हमें तांकर लाइवलीहुड ऊपर भी डिपेंड माने हैम्पर करूछु ना ए ट्राइब्स माने करो सौरा ट्राइब आ कौन ट्राइब माने करो तो सेटा भी गोटे कंसर्न ही जाउची बुझि पल्ला एंड आल्सो गोटे सीनिक इकोलॉजी माने गोटे फ्राजाइल माउंटेन इकोसिस्टम जितरे कि हमें बहुत वर्तमान डिफॉरेस्टेशन देखिया को पाउछु टूरिज्म प्रेशर माने टूरिज्म रो काउंट बढ़ुची टूरिज्म ताको फल से मैनेज करा जाउनी जदी टूरिज्म को हमें मैनेज भी करबानी देन देयर इज आल्सो चांस कि हमर से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत हबो है ना एंड से सब जिंस पय वाइल्ड लाइफ डिक्लाइनेशन हमें जदी देखुछु खास करके एलिफेंट्स और टाइगर एंड जितने की भी एंडेमिक और थ्रेटेंड स्पेसीज हमें सेठी देखिया को पाउथुलु से सब विलुप्त हेलानी धीरे धीरे ओके सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि आमे किछिटा स्टेप्स नबा फॉर इट्स कंजर्वेशन अदरवाइज जा ताकू हेरिटेज साइट हिसाब रे घोषणा हेछि तार किछि माने रहइबा हैला सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट ओके नेक्स्ट गोटे बढ़िया आर्टिकल मु देखिया को पाइथिली and it was under the editorial section of the Indian Express. This was the editorial from the Indian Express. Okay. Mainly healthcare विषय इछि एठी किछटा तमर से डिस्कशन करिथन कि he is the senior consultant cardio surgeon at Narayana Health Devi Prasad Setti. So basically जेत्ती की भी हमर स्कीम्स अछि ना जेत्ती की भी स्कीम्स अछि खास करके रिलेटेड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर से सब रिगार्डिंग किछटा जिंस से एटी मेंशन करिसंते तो जदी गोटे हमहु एसे केबे लिखिया को पड़ला कि गोटे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर रे भी किछि गोटे क्वेश्चन आसिला रिलेटेड टू हेल्थ केयर को हमें इकोनॉमिक ग्रोथ सहित केमिति रिलेट करि परिबा है ना कि ता सेही क्षेत्र रे हमें गोटे बढ़िया एसे लिखि परिबा तो लेट अस जस्ट रीड व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो प्रथमे तो से कहि छंदी कि हमें जतो बळे गोटे डेवलप्ड इंडिया रो स्वप्न देखुछु बाय 2047 हैला तो सेतो बळे हमको खाली माने हेल्थ को गोटे इन्वेस्टमेंट गोटे एक्सपेंस रे न देखि कि हमें ताको गोटे इन्वेस्टमेंट हिसाब रे केमति देखि पारे हैला तो जेत्ति की भी हमर इनिशिएटिव्स हेछि रिगार्डिंग हेल्थ केयर स्टार्टिंग फ्रॉम द हमर पोषण अभियान हो हैला आउ तुम आयुष्मान भारत विषय भी से कहचंती से पोषण अभियान विषय भी कहचंती से जन औषधि केंद्र विषय कहचंती प्रथमे तो से कहले कि आयुष्मान भारत जो लॉन्च हेतिला 2018 रे सेटा गोटे लार्जली पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो थरे कि तमरो 55 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिटीजन सेथरे कवर होंती तो ए सब जिंसटा इंट्रोड्यूस करा गला आयुष्मान भारत रे तो आगुरु जो एते मेडिकल रे खर्च होतला मेडिकल बिल से जो कैटास्ट्रोफिक खर्च होतला सेटा हम कमेइलु तो इनडायरेक्टली जदि आमे पैसा तांकर हेल्थ रे कमाउछु एक्सपेंस रे कमाउछु इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ते पैसाटा तांकर रहूची माने लोक मानका पाखरे से पैसाटा रहूची तो जतबे लोक मानका पाखरे से पैसाटा रहूची से पैसाटा को तांके अलगा को जगह रे इन्वेस्ट करि परछंती अदरवाइज से पैसाटा को तांके छुआ मानकर एजुकेशन रे भी इन्वेस्ट करि परछंती हैला तो दैट इज हाउ ही इज ट्राइंग टू लिंक हेल्थ टू प्रोडक्टिविटी एंड हाउ हेल्थ केयर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कि हेल्थ केयर रो जो इनिशिएटिव्स निया गला आयुष्मान भारत हला तमरो पोषण अभियान हला जन औषधि केंद्र हला स्वच्छ भारत मिशन भी हला हला ए सबु जिंस आयुष्मान आरोग्य मंदिर हला ए सबु जिंस केमिति तमरो हेल्प करूची इकोनॉमिक ग्रोथ
बिकज जदि आम देखा आयुष्मान भारत रे जो लोक माने आगुरु लोक मानकर मेडिकल रे बहुत लक्ष लक्ष टका खर्च हो जाता एबे सेतिकी होउनी बिकॉज ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत जोगु हैला तो इन ए वे आम पोवर्टी टाको भी रिड्यूस करिवारे हेल्पफुल हे परछु से केस रे हैला पोवर्टी टाको भी रिड्यूस करिवारे हेल्पफुल हे परछु ता सहित ए जो पोषण अभियान अछि पोषण अभियान एंती नु कि आमे किसी जिंस हैला परे ताको ट्रीट करूछु ना पोषण अभियान ता आमे केमिति नै परिबा कि जदि हमर न्यूट्रिशन अर्ली लेवल न्यूट्रिशन ही ठीक थिबो देन हमर फ्यूचर रे आमे आउ टिके हेल्दी हे परिबा बुझ पलो अर्ली न्यूट्रिशन ठीक रहिले हमर हेल्थ रो प्रॉब्लम ही देखा जीवनी हेल्थ रो प्रॉब्लम देखा जीवनी ता माने आमे आयुष्मान भारत आडू आसीबानी कि हमर हेल्थ रो खर्च हबनी बुझि परछ तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो प्रिवेंटिव मेजर हिसाब रे हमर पोषण अभियान ता केमिति हेल्पफुल होची है ना यो अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिया पे फॉर द मदर्स फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज ता पे भी कोन कोन स्टेप्स निया जाइथिला एंड सेटा केमिति हमर प्रोडक्टिविटी टाको हायर माने लॉन्ग रन रे प्रोडक्टिविटी टाको हम ताको केमिति लिंक करि परिबा ऑल्सो जो जन औषधि केंद्र गुड़ाक अच्छी इंडिया रे प्राय 16,900 जन औषधि केंद्र अच्छी तो ये सब केंद्र रे तुमको बहुत भलो डिस्काउंट रे मेडिसिन मिलुची तो आगुरु मेडिसिन रे जो लोक माने खर्च करुथले से खर्च एबे तांके गोटे बिजनेस स्टार्ट करि परिबे से पैसा रे पिला मानकर स्कूलिंग रे से खर्चटा हे परिबो कि तांके भलो खाद्य खाइबे से पैसा रे बुझी परलो तो मेन ऑब्जेक्टिव ही इज ट्राइंग टू गिव कि आमर जो पैसा सेव हो सब जिन से पैसा भल कम अलग कम लगे पारे स्वच्छ भारत मिशन केमती आम प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ सहित लिंक कर देख स्वच्छ भारत मिशन रे आमर कौन आम फोकस कर सैनिटेशन उपरे जदि सैनिटेशन ठीक रहिबो हमको डिजीज हबनी तो ऑब्वियसली आमर इनफेंट लाइफ बंचिबो हमको हॉस्पिटल जीवाको पड़िबनी हमर पैसा भी टिके बंचिबो से केस रे हैला सो इनडायरेक्टली स्वच्छ भारत मिशन टेक भी हमर इकोनॉमिक ग्रोथ रे केमती हेल्पफुल हैला बुझी पारल आ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अछि आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे बेसिकली तमरो प्राइमरी लेवल हेल्थ चेकअप गुडा को हुए माने हम जो स्क्रीनिंग कहूछु टेली कंसल्टेशन ए सब जिंस जो होउची सेथिरे भी आमे गोटे एमती इकोसिस्टम बनौछु जोथरे कि सिटीजन्स माने हेल्थियर आउ फैमिली माने ताकर इनकम टाकू माने सेव करके रखी पार्छन्ते सो रिसेंटली जो जीएसटी टा भी डिक्रीज करा जायछि इनकम टैक्स रे भी किछिटा हमको रियायती मिलिछि तो ए सब क्षेत्र रे पैसा टा टिके हमर रहिबो हाथ रे तो से पैसा टा हम अलगा जिंस रे केमति यूटिलाइज कर परिबे सो हाउ दिस स्कीम्स आर बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ ता रिगार्डिंग ए आर्टिकल टा देछि तो जेते बेले तुमको ये आर्टिकल टा मिलिबो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट हैव ए लुक एट इट वंस है ना तो पीडीएफ रे तो पढ़ी पारे बहुत भल से एटा को पूरा भल से टिके पढ़ी दबो बुझि पालो सो एट द एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि as India is advancing towards 2047 the dividends of these reforms will multiply in higher life expectancy rising incomes and a citizenry capable of shaping its destiny inclusive preventive healthcare is no longer a peripheral concern it is the backbone of a national strength and a decisive instrument for the economic transfer okay so जदि गोटे मु जिस्ट देवा को तुमको ट्राई करे कौन आम एठू शिखिया को पाउछु तो जो हमर आयुष्मान भारत योजना हला पोषण अभियान हला स्वच्छ भारत हला सेथि पई हमर डिजीज रो बर्डन ता हमें सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करि परिछु हाउस होल्ड रो सेविंग्स ता हमें बढ़ाई परिछु सो इवेंचुअली हमें ह्यूमन कैपिटल टा को एनहांस करि परिछु इनडायरेक्टली एंड इंडियास हेल्थ केयर स्ट्रेटजी एबे वर्तमान हेल्थ को गुटे हेल्थ माने तार व्यू जो थिला कि मियर वेलफेयर को रिकॉग्नाइज करथला वर्तमान ताको गुटे इकोनॉमिक ग्रोथ हिसाब रे हमें रिकॉग्नाइज करि पारुछु आयुष्मान भारत इज ए गेम चेंजर 2018 रे आयुष्मान भारत लॉन्च हेतिला एंड 55 करोड़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिटीजन को से कवर करूछि ओके एंड इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जोथरे कि तमरा 27,000 हॉस्पिटल्स एथरे तमरा इन्वॉल्व अछंती तो ए सब जेतो आमे गोटे फैमिली को प्रोटेक्ट करूछु हला तो तांकर हेल्थ केयर खर्चटा जेतो सरकार वहन करूची तो सेही खर्च रे तांकर जो पैसाटा जाई थांता से मनीटा वर्तमान से सेव करि परिबे एंड ताको अलगा वे रे यूज करि परिबे एंड इन ए वे आमे तांकर पॉवर्टी टाकू भी सेठी डील करूछु व्हिच इज अ सस्टेनेबल गोल
ହେଲା ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ଏ ସ୍କିम ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा पोषण अभियान इज माने कहि परिबा आमे एटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एमिते स्कीम्स आमे आनिचु जोथरे कि आमे अर्ली लेवल रे जदि भी किसी डिफिशिएंसीज आमे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पाउछु ताकू केमते आमे ट्रीट करि परिबा। तो ताकू टारगेट करिया पे खास करी तमे देखिबो जो आशा दीदी माने अछंती तमरो जो अंगनवाड़ी वर्कर्स माने अछंती तो सेई तांको माध्यमरु तमरो न्यू बॉर्न बेबीज मानगु या फिर एक्सपेक्टिंग मदर्स मानगु प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा जाउची। तो अर्ली लेवल रे कि हमें से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आडे काम करूछु। सो दैट इज ए laying a foundation for better learning outcomes because future रे long run रे जदि से माने healthy थिबे then they will be productive. If they are healthy they will be productive. And if the youth is productive then obviously our economy boost hobo hi hobo. So such preventive measures reduce absenteeism and ensure active participation in economic activities. Human capital आम्ही build करूचो as I said कि healthier population is more productive leading to increased economy output and eventually sustainable growth. तो जेतबेले आमे हेल्थ ऊपर एम्फासिस करूछु तो आपको आमे गोटे एक्सपेंस हिसाब रे न नै गोटे इन्वेस्टमेंट हिसाब रे ही गवर्नमेंट भी एटा को भाबिची। अदरवाइज से एते खर्च कोन पे करूची बिकॉज से ताको गोटे एक्सपेंस हिसाब रे नउनी ताको गोटे इन्वेस्टमेंट हिसाब रे से भाबुची व्हिच विल एक्ट इन फेवर ऑफ आवर विजन ऑफ द विकसित भारत by 2047. Okay, so in conclusion we can say India's integrated approach to healthcare not only addresses immediate health needs but also fosters long-term economic development by investing in people's well-being. तो गवर्नमेंट वर्तमान इन्वेस्ट करूची people well-being because से long-term क्षेत्र रे भाबुची ए सब जिंस कले long-term रे हमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट निहाती हबो. So this gives you a perspective to how to look upon the schemes. कि हम schemes को केमिति एत long term रे केमिति देखुछु केमिति भाबी पाउछु तमरो गोटे थिंकिंग टा भी एमती एडिटोरियल्स पढिले इंप्रूव हे परिबो. That is why I included this article over here. Clear? बुझी पारलो? ओके सो MIG 21 रो लास्ट फ्लाइट आमे देखिया को पाइलु रिसेंटली. तो एते वर्ष हला MIG 21 आम सहित थिला इंडियन फोर्स सहित इंडियन एयरफोर्स सहित 6 decade long माने 60 वर्ष हेलानी आमे MIG 21 यूज करि आस्थलु हैला. तो ताकू वर्तमान आमे गुड बाय कहि देलु. ओके सो टिके आ विषय आमे वर्तमान पढिबा. The last flight of MIG 21 which is a supersonic jet fighter. सुपरसोनिक अंडर रे जीव कोन पे सुपरसोनिक म उथरे तुमको कहि दोची कि जदी तमरो मैच नंबर 1 to 5 भितर रहिला ताको हमें सुपरसोनिक कहूछु. जदी तमरो मैच नंबर ग्रेटर देन 5 रहिला ताको हमें हाइपरसोनिक कहबा. आ जदी तमरो लेस देन 5 रहिला ताको हमें सबसोनिक कहू. राइट? सो ये जो MIG 21 will come under supersonic. That means तार मैच नंबर 1 to 5 भितर. And to be specific तार मैच नंबर होची 2.3. एटा हमें मन रखिबा. ताको गोटे कोड नेम दिया जायतिला बाय नाटो which is fish bait because of its shape. हैला because of its shape. So it is a supersonic jet fighter and interceptor हिसाब रे भी काम करे हैला. इंटरसेप्टर माने बुझिथिबो मु बहुत सारा क्लासेस रे भी कहिछि कि जदी गोटे एनिमी रो एयरक्राफ्ट आसुचे ताकू हमें मिडवे रे ताकू डिस्ट्रॉय करि परिबा हैला. तो दैट इज द मेजर वर्क ऑफ द इंटरसेप्टर. सो गोटे सुपरसोनिक जेट फाइटर गोटे इंटरसेप्टर हिसाब रे काम करथुला ताकू तार निकनेम थिला फिश बेट and it was developed by designed in the 1950s by the Mikoyan Gurevich Design Bureau which was Soviet Union रे गोटे पार्ट थिला एटा. तो से माने को डिजाइन करथिले 1950s रे.
and first prototype fly करथिला 1955 रे, which became the world's most produced superjet. माने सबुठु बेसी जदि वर्ल्ड रे को सुपरसोनिक जेट प्रोड्यूस हेतला that was MiG-21, and सबुठु बेसी जदि इंडिया को सुपरसोनिक जेट यूज करथिला that was also MiG-21 ହେଲା. So India has procured more than 700 plus MiGs across variants, and जो हमरो most last हमरो MiG थिला it was MiG-21 Bison ହେଲା, MiG-21 Bison, and first time India 1963 रे ताको इंडक्ट करथिला in the Indian Air Force रो first supersonic jet हिसाब रे. ओके, तो एई जो MiG-21 अछि हमें ताको 1965 रो वार रे भी तार एक्शन देखिथिलु, 1971 रो बांग्लादेश लिबरेशन वार रे भी यूज करथिलु, 1999 रो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट रे भी हमर MiG-21 यूज हेछि, एंड ऑलमोस्ट जत्ते के भी वार कॉन्फ्लिक्ट्स अछि हमें सब थरा MiG-21 यूज करिछु, एंड जेहेतु हमें ताको एते लेवल रे यूज करथिलु तो ऑब्वियसली जदि सेही हिसाब रे देखला तर क्रैश रेकॉर्ड टिका हाई थिला, बिकॉज हम यूज भी सेती करथुलु, तो जदि तुम यूज सेती करबो तो सेती तमर नष्ट हबो ही हबो ना, तो जेहेतु यूज हमें बहुत मात्रा रे करथुलु तो तारो क्रैश रेकॉर्ड भी टिके हाई थिला, तो हमें 170 प्लस पायलट डेथ भी देखिछु, 500 प्लस एक्सीडेंट भी देखिछु एथरे, एंड ए सब वार रे से हम सहित रहि आछि. ओके, सेति पे एते बढ़िया से ट्रिब्यूट भी करा गला. सो तारो गोटे फीचर जदि हमें देखिबा, इट इज अ सिंगल इंजन सिंगल सीट इंटरसेप्टर, एंड तारो टॉप स्पीड मैच होछि 2, एक्जेक्टली आई थिंक इट इज 2.3. ओके, सो सेति पे ताको हमें सुपरसोनिक कहूछु. ओके, डेल्टा विंग फॉर रैपिड क्लाइंब बट लिमिटेड टर्निंग कॉम्बैट, बाइसन अपग्रेड जोटा कि हमें लास्ट देखिथिलु 2006 रे बाइसन अपग्रेड आस्थिला, एंड दैट इज द लेटेस्ट हमें एटा यूज करथिलु, MiG-21 रो लेटेस्ट वर्जन थिला इंडिया पे MiG-21 बाइसन. तो जो थरे कि मॉडर्न एवियोनिक्स हमें देखिया को पाइथिलु, रडार सिस्टम भलो थिला, बीबीआर मिसाइल्स भी देखिया को पाइथिलु, इमरजेंसी थ्रस्ट मोड भी सेतरे थिला, ए सब जिंस तारो फीचर्स रे थिला. Okay, so it has served as Indian Air Force backbone for 60 years and trained multiple generations of fighter pilots. And it symbolized Soviet और India रो defense cooperation. Because it is Soviet बनेइथिला, still हमें ताको एतिकी 60 वर्ष रे ताको हमें यूज करथिलु. तो सोवियत और इंडिया रो डिफेंस कोऑपरेशन ताको भी सिंबलाइज कला ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इवन बियॉन्ड एज वेल. ओके, सो yeah, 60 years it has completed, and mostly एबे हमको हमें जते नुआ टेक्नोलॉजी साडो को जाउछु तो आपको भी हमको विदाई देबा को पड़िबो निहाती, सो दैट वी कैन बी यूजिंग मोर न्यू टेक्नोलॉजी जोटा हमर फ्यूचर रे अछि हम पे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर MiG-21. नेक्स्ट रोइला तमरो अग्नि पी मिसाइल रो टेस्ट फाइट हेछि. सो इन ए फर्स्ट इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि पी मिसाइल फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर. ओके, सो लास्ट तमे न्यूज देखिथिबो अग्नि 5 रो सक्सेसफुल लॉन्च हेतला, दीथरो लास्ट ईयर भी लॉन्च हेतला अग्नि 5 रो, एमआईआर भी टेक्नोलॉजी टा को टेस्ट करा जायथला, एंड तापरे तारो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रो टेस्ट भी हेतला हैला. एबे अग्नि 5 रो अगेन ता पर वर्जन हला अग्नि पी रो रेंज टा सेमति किछि बढ़िनी हैला, बट व्हाई इट इज इंपोर्टेंट एटा देखो. अग्नि पी boasts several key features, make it a significant addition in India's defense arsenal. The missile's canisterized design. Canisterized design माने हमें देखो टिफिन डब्बा सर्विस बुझुछ ना, सेमिति कैनिस्टर जिनसटा बुझे कि हमें ताको इजीली गोटे डब्बा भीतर पुरै कि ताको ट्रांसपोर्ट करि परिबा, ताको भल से स्टोरेज करि परिबा, एंड तार लॉन्च प्रिपरेशन रे बेसिक टाइम जीवन नहीं, इज माने बहुत जल्दी ताको हमें लॉन्च करि परिबा. हेलो, सो अग्नि पी और अग्नि प्राइम तारो ना, इट इज द नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल माने न्यूक्लियर वारहेड से ता सहित नहीं कि जाय परिबो, एंड इट इज ए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इंटरमीडिएट रेंज माने केते किलोमीटर हमें बुझिबा, इंटरमीडिएट रेंज माने केते किलोमीटर हमें बुझिबा, लेस देन 5000 है ना, 5000 रु ऊपर हेले सेटा हमर इंटरकॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल हे जिवो जोटा कि हमरो अग्नि 5 रे हम देखिबो पाइछु बट एटा आर रेंज टू बी स्पेसिफिक जदि हमें देखिबा आर रेंज हला अप टू 2000 किलोमीटर हमें ताको यूज कर परिबो हला सो इंटरमीडिएट रेंज रे ही ताको यूज करा जे परिबो and it is a part of India's Agni missile series. So Agni 1, hello, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5, and finally Agni Prime. Robot test, successful test is the So basically, it is designed and developed by DRDO Ameta Janichu and to provide flexible, survivable, and rapid response capability in India's nuclear doctrine to diversify launch platforms beyond a road based system. माने जेतेबेले आमे ट्रायड कथा कहूछु देन अपार्ट फ्रॉम द रोड हैला आमे केमती वाटर वेज रे ताकू आमे इंडक्ट करि परिबा वाटर थ्रू आमे मिसाइल लॉन्च करि परिबा एयर टू लॉन्च करि परिबा सेटा आमे कहूछु सो एटा भी ए जिंसटा जो आमे बनेछु अग्नि प्राइम ताकू आमे रोड छडा भी वाटर टू एयर रू भी ताकू आमे लॉन्च करि परिबा ओके सो एंश्योर्स resilience against first strikes then as I said up to 2000 km range बढ़िनी जदि आमे अग्नि 5 रो रेंज कथा कहबा अग्नि 5 रो रेंज केतला जानचो अग्नि 5 को आमे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहू है तो ऑब्वियसली तार 5000 किलोमीटर रो अधिका थिला कार अग्नि 5 रो इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्लिक्ट अलगा कॉन्टिनेंट को जाके हिट करि परिबो बट एटा एते दूर को जीवनी अप टू 2000 किलोमीटर ही जीवो बट तारो मेन हला कि तारो रिएक्शन टाइम ता बहुत छोटो आ तारो मोबिलिटी कैनिस्टर मिसाइल कहली ना कैनिस्टर मिसाइल माने एबे तमे ए इमेज रे जेमते देखिथिबो कि ताकू एटा गोटे रेलवे रे ताकू नै कि आमे जाई परिबा तो गोटे जगह रो आ गोटे जगह को आमे ताकू इजीली नै कि जाई परिबा ताकू इजीली स्टोर करि परिबा सेति में आमे कहूछु कि इट कैन मूव फ्रीली अक्रॉस नेशनल रेल नेटवर्क तो हम जदि एनिमी भाबितु आई मीन एनिमी जदि भाबितु हम एटू स्ट्राइक करिबा बट ताकू हमें नै कि एटू भी स्ट्राइक कर परिबा तार मोबिलिटी हला तार पावर है ना अग्नि प्राइम रो सो इट रिड्यूसेस द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लॉन्च साइट्स माने जदि जने भाबितु हम एटू लॉन्च करिबा आमे किंतु एटू लॉन्च कर देबा कि ताकू आउटपुट नै कि लॉन्च कर परिबा से कैपेबिलिटी तार रहउची कैनिस्टर सिस्टम माने फास्टर डिप्लॉयमेंट ताको सेफली स्टोर करि परिबा लुचेक रखि परिबा स्टोर करि परिबा और लॉन्गर शेल्फ लाइफ भी तारो रहइबो ओके एंड क्विक रिएक्शन टाइम बिकॉज इट वाज माने तारो लॉन्च ता बहुत जल्दी हे जिवो आ मिनिमल विजिबिलिटी सहित भी हेबो दैट इज द वन मोर एडवांटेज ऑफ द अग्नि प्राइम मिसाइल सो स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सब अच्छी एंड इंडिपेंडेंट लॉन्च कैपेबिलिटी भी तारा रही एंड स्टेल्थ स्टेल्थ माने वो तुमको बारंबार कही स्टेल्थ माने हिडन तो ताकू डिटेक्ट करवाटा एते इजी रह नथिबो बिकॉज़ सेतरे लेजर्स भी इन्वॉल्व अछंती तो ताकू रिड्यूस माने डिटेक्टिबिलिटी तार एते हाई नाही तो लोको माने जो एनिमी ताकू इजीली डिटेक्ट करि परिबनी तो जेतेबेले ताकू इजीली डिटेक्ट करि परिबनी ताकू इंटरसेप्ट करि परिबनी सो दिस इंप्रूव्स द सर्वाइवबिलिटी अगेंस्ट द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स so this will be helpful for strategic deterrence because से nuclear वेपन भी नहीं की जाई परिबो आ तीनटा जगह भी नहीं की जाई परिबो लैंड रो हो वाटर रो हो एयर रो हो सो इंडिया को से गोटे एमिति ए सब नेशंस मान को सहित इंडिया को से प्लेस कर दोची जे कि रेल बेस्ड कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी कैपेबल अछि लॉन्च करिवारे ओके एंड जियोपॉलिटिकल एज भी मिलेबो इंडिया रो न्यूक्लियर ट्राइड सर्वाइबिलिटी टाकू से एनहाउंस करिवो एमिड द चैलेंजेस हमें जतली फेस करूछु एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के ताकू हमें रेल मोबिलिटी माने रेल थ्रू भी हमें ताकू लॉन्च करि परिबा सो रोड रो भी हमें ताकू लॉन्च करि परिबा सिलो सिस्टम्स रो भी लॉन्च करि परिबा एंड कॉम्प्लिकेटिंग एडवर्सरी टारगेटिंग माने लोको जदी कि टारगेट भी करूची देन ताकू हमें आउट जगह को नेकी सेठू लॉन्च करि परिबा which will also these are the all benefits of the Agni Prime design so it is a intermediate range ballistic missile एटा हमें मन रखिबा हला एंड तार फीचर्स एगुडा हमें मन रखिबा कोन कोन तार मेजर फीचर्स रही ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे तमर प्रीलिम्स एग्जाम अछि आई नो सेते पय जाय के पढो
आज लंबा क्लास मुझे रखिली बट स्टिल जेहेतु हमको आमर स्ट्रिक्ट कंटिन्यू रखार अच्छी करंट अफेयर्स एवरी वीक हमको निहाती देखियार अच्छी कौन चली दुनिया रे कौन नहीं से वी हैव kept the class today. Okay, so happy Dashera to all of you. ଆଉ ଦଶହରାରେ ବୁଲାବୁଲି ବେଶୀ କରିବନି ପାଠ ପଢିବ ଓକେ ଥରେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଦଶହରା ତମ ମାନେ ମନେଇବ ଓକେ I hope everything is clear କିଛି ବି doubt ରହିଲା you can ask me otherwise we can end it right now. Happy Dashera Sunita. Happy Dashera Jagannath, thank you. Happy Dashera Vijay, thank you very much. Thank you. Chalo, bye.